that's why they are known as company building assignments, that they are supposed to ask those questions which you should be asking yourself. क्या are you in the right direction? Focused approach के साथ करते हैं. So what FI का जो पूरा ये curriculum is, वही बात है कि जो आपको जो 4 months की जो आपकी जर्नी है, 4 to 5 months की, वो आप यानी कि it's a kind of fast track your आपकी जो ओवर, अगर आप इन जनरल अगर आप उसमें करते हैं, जो 2 से 3 साल की जो आपकी जर्नी है, उसको 4 से 5 महीने में शॉर्ट कर देते हैं. Why? Because very focused approach. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको करें. मैं आज जिनने नहीं की उनको मैं ऑलरेडी मेल्स मैं कर चुका हूँ. सो आई होप के वो सारा भी इन टाइम वो सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो पूरी हो जाएंगी. साथ साथ क्वेश्चंस हैं तो आप अली यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो. So Kamran sir, actually my question is from those people during assignments complete bhi ki and from you as well. So I think we never got a walkthrough ke there were couple of assignments jo ke previously jinke sessions nahi the but the assignments were due. Okay, and my concern is for a single founder it gets very tiring. I understand कि it is important, लेकिन अगर उतना accuracy और उतना value लेके आपने करना है तो it does require time. And I understand कि in a week's time you can spend like a good 4 to 5 hours, 6 hours maybe in completing 1 week's assignment. But I think अगर if you expect कि हम previous weeks की भी 2 assignments जो थी वो कर लें, so I think that's a lot. जो कि which wasn't either कि guided कि आपने भी कर लेनी है in 1 week आपने 3 assignments complete करनी है. So that is my question कि जिन लोगों ने की हैं कि how much time did you guys actually spend? इसका जवाब जो है ना मैं नहीं दूंगा. I asked इसके you want अच्छा आप सारा मुझे समझ आ गई. ऐड करो और अब जवाब जो है वो देंगे जो कंप्लीट. नहीं जवाब आई थिंक क्योंकि मैंने उसमें से सिर्फ कुछ मेरे पोर्शन मिसिंग हैं, सो आई वुड लाइक मतलब वो तो आपका आंसर भी हो जाएगा. और उसमें आई थिंक कोई इतना डेडिकेटेड टाइम नहीं है, बिकॉज मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ ना कि लाइक 1 आवर या 30 मिनट्स, इट डजंट टेक यू 1 आवर, मतलब इट टेक्स यू लाइक 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि मैंने करके देखी है द आंसर्स आर काइंड ऑफ शॉर्ट. सेकेंडली उन्होंने कोई वर्ड काउंट नहीं स्पेसिफाई किया हुआ, उन्होंने ये नहीं स्पेसिफाई किया हुआ कि आपने एग्जैक्टली इसमें करना क्या है. हाँ यस एग्जैक्टली वो इंट्रोस्पेक्टिव है. उसमें हाँ मतलब अगर वो ओवरड्यू हो भी जाए, एग्जैक्टली ओवरड्यू होने पे भी लाइक देयर इज नो पेनल्टी अभी तक है. अच्छा देखें असाइनमेंट्स में ना ये आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. बिल्कुल देखें आप इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. आप बात मैं ऐड करना चाहूँगा, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए और बहुत ही वैल्यूबल है. आई विश कि मैं चैट जीपीटी की हेल्प से ना करता, क्योंकि उसी की वजह से मैंने कंप्लीट किए हैं. और ये जो कह रहे हैं कि 15 मिनट्स में 30 मिनट्स में तो नहीं होता. ठीक है, इवन अगर आप खुद करते तो 2-3 घंटे में भी नहीं कर सकते. अगर इवन चैट जीपीटी से भी करते हैं और वहाँ से भी हेल्प लेते हैं, ठीक है, तब भी घंटा तो लगता है. ठीक है, सो आई विश कि मैं खुद करता. लेकिन प्लस मेरा एक क्वेश्चन भी है कि क्या ये होल्ड पे नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वो फाइबर जैसा टाइमर लगा होता है कि भाई हमने करना है, तो या तो हम काम करेंगे उस पे. देखें अच्छा anybody else want to add something like Yes. we have to start the session also. Yes, Karman Sahab, I'd like to add something. जी Ali Musafir. Ali Yes, I'd like to mention here very clearly that while there's a lot of information available on the FI platform, it doesn't necessarily mean that you need all of that information, right? Maybe you're already good with financials. Maybe you're already good with a lot of terminology that comes with being a founder in a startup. So first off, what I think is the most important, you have to recognize your weak areas. Once you recognize your weak areas and then match them with what FI is offering, और फिर आप उन्हीं points पे ज़्यादा focus करो जहाँ पे आपके जहाँ पे आपने grow करना है, जहाँ पे आप already established हो, उनको you can use chat GPT और उनके आप छोटे answers लिख दो. You can even try to skip तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके छोटे आंसर लिख सकते हो. लेकिन I think the foremost important thing is to recognize your own weakness first and then match that with what FI is offering. That's it. Thank you Ali. ठीक है, thank you Ali. देखें in the end
अगेन वो जो अली ने बात की कि यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल, लेकिन ये है कि आप जब साथ साथ करोगे फिर आपको टाइम आप मैनेजमेंट हो जाती है. तो अली आंसर योर क्वेश्चन, टाइम तो है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द फाउंडर की गेम ही सारी टाइम मैनेजमेंट की है ना. लेकिन अगर आप अपने कंपनी के लिए स्टार्टअप के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर मैं इस पर क्या कमेंट करूँ. ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये वैसे एक बोझ है और मेरा स्टार्टअप पे बोले, आई हैव विद मी सरफराज यहाँ पे. सरफराज आप ऐड करेंगे कुछ, आपने भी असाइनमेंट एक ज़माने में की हैं, क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान था या क्या टाइम वेस्ट था, व्हाट इट वाज फॉर यू. आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए कन्वर्सेशन से निकल गया था, मुझे कंप्लीट तो कन्वर्सेशन के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जनरली आप असाइनमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो और उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहे हो. तो एज कामरान मेंशन्ड, आई आई वाज पार्ट ऑफ द कोहर्ट विद हिम. आज से तकरीबन कामरान अ गुड 7 years ago, राइट? 15 तो फिर 9 साल हो गए. हाँ, लेकिन आज भी सीरियसली स्पीकिंग, व्हेन आई थिंक अबाउट अ न्यू फीचर, अ न्यू कैंपेन दैट आई हैव टू रन फॉर अ कंपनी, कोई नया प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, तो वी गो बैक एंड लुक एट द असाइनमेंट्स दैट वी यूज्ड टू डू फॉर देम. और वो आज भी उतनी वैलिड हैं और उतनी यूजफुल हैं जितनी उस वक्त थी. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि एक स्टार्टअप के ऊपर, एक फाउंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बहुत जगहों पे डिलीवर करने का. एंड इट्स वेरी इजी कि आप जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, कि यार ऐसे चलो पास करना है तो कुछ ना कुछ जोड़ के कर दो. बट अगर आप इनको प्रॉपरली फॉलो करोगे ना, तो यार ये एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है और बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीका है किसी काम को करने का. एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर जर्नी. जैसे मैंने कहा, वी आई स्टिल लुक बैक एट दोज असाइनमेंट्स एंड ट्राई टू डू देम इफ एंड व्हेन पॉसिबल. सो आई होप this adds some value. थैंक यू वेरी मच. आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन. देखें, आपने एक टाइम तो निकालना है. आप करना शुरू, आप स्लोली ग्रेजुअली करना शुरू करोगे, यू विल बी एबल टू डू इट. इफ अदर्स कैन डू इट देन डेफिनेटली यू कैन डू इट एज वेल. अगेन इम्पॉर्टेंट तो है, उसको मतलब हम वो नहीं कर सकते. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो गया. सो वी हैव ऑल्सो प्लान्ड वर्कशॉप इन दिस वीक. मैं अभी उसकी डेट और टाइम जो है वो भी मैंने इसी वीक में लॉक करनी है, लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. लास्ट वीक वी हैड अ वेरी गुड सेशन ऑन बिजनेस मॉडल पे. जिन्होंने अटेंड की वो खुद बताएंगे कि उनको कैसा लगा, लेकिन अटेंडेंस वाज वेरी पुअर, जस्ट बिकॉज मैंने कहा कि मैंडेटरी नहीं है तो लोग नहीं आए. और अब द थिंग इज कि इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, वी आर डूइंग इट फॉर यू गाइस. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो हम फिर क्या एफर्ट करें. सो इसमें इस दफ़ा इस कस्टमर डिस्कवरी पे ही हमारे वर्कशॉप है. आई विल बी कंडक्टिंग इट अलॉन्ग विद बाबर. और वो में हम तब करेंगे जब आप लोगों से हमें पता चलेगा कितने लोग अटेंड करना, हु एक्चुअली आर कमिंग. हम एक सर्वे रन करेंगे वो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. दोज हु रियली वांट टू कम, जिनको लगता है कि यार हमें वैल्यू ऑन मिलेगी, वो बताएंगे यस वी वांट टू कम. ओनली देन वी विल सी कि हमें करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. विदाउट फर्दर अड्यू, हम स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन एंड वेलकम टू टुडेज एफआई सेशन. हमारी रिकॉर्डिंग करी ठीक हो गया. तो आज का सेशन इज ऑन कस्टमर डेवलपमेंट एंड वी हैव विद अस सम अमेजिंग मेंटर्स एंड स्पीकर्स फॉर दिस सेशन. Let's start first with Sarfraz Arshad, who is the founder and CEO of ToyCycle. Sarfraz, over to you. थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें या सामने आ जाएं, उसके बाद फिर महमूद साहब का इंट्रोडक्शन. Thank you so much. Is it just the introduction or is it going to be the complete lecture? Acha, nice. Zabardast. Thank you so much, Kamran. As you guys already know, I've been part of the FI session in 2015. 2015 के cohort में जो मेरा startup था, that was by the name of Talk Health. We were trying to digitize the healthcare delivery system in Pakistan. I successfully exited from that. I sold the product to a company by the name of Cognitive Health International. And after that, I've been working on another product by the name of ToyCycle. मैंने उससे भी तकरीबन 1 साल ऑफ लिया हुआ था, but recently I've joined back as the Chief Strategy Officer, and we're trying to expand. ToyCycle is a marketplace for used toys in the US. So US के अंदर जो e-commerce है, that's a huge market and slowly expanding in the other parts of the world as well.
and we're trying to revolutionize the e-commerce of toys over there. And if you have any questions, I'm available. Thank you very much. I would also like to welcome our second mentor of the day, Mr. Mehmood Lodhi. If you could sir, come on stage and kindly introduce yourself, and then we'll start the today's session. Hello everyone, I'm Mehmood Lodhi. So it's been almost silver jubilee in the industry. So I've spent 25 years. So with a lot of tech startups, health tech, and luckily I was part of Dubai Future Foundation. If people know, there's also the Heaven for Startups. So my journey is like started from those days when there was XT. I don't know if anybody knows about XT computers. Okay. So Pentium का पता होगा, right? Pentium को लोग जानते हैं ना. Pentium से पहले 286, 386 नहीं idea ना. So I'm that old when started XT, then 286, and so I'm that old. So we started using these old mobiles, and now we are in the smartphone. मैं भी किसी को उस दिन बता रहा था कि हम इतने पुराने हो चुके हैं कि when we were in 10th grade, तो किसी ने कहा था कि यार एक बेल आई है जो दरवाजे पे लगती है, तो कोई बेल बजाता है तो हम अंदर से देख सकते हैं कौन आया है. So I was with the so, but it's a very amazing journey. Like today we're standing here with a lot of experience, and which we will definitely share with you guys, starting from like part of a lot of startups, starting from zero to multi-million-dollar deals, and then moving to the region within the country. So वो बहुत सारे experiences हैं which we will share with you guys. ठीक है? So good luck to you guys, and we'll speak to you soon. Thank you, Mehmood Saab. Thank you very much. Our third mentor, she is on her way. इनके एक मीटिंग आ गई थी और वो जो है वो VVIP मूवमेंट की वजह से वो भी फंसी हुई. So I won't share, मैं उससे ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता. लेकिन वो कि she will hopefully she will join us after 3 PM के बाद वो हमें ज्वाइन करेंगी. अच्छा जी, तो हमारा जैसे फॉर्मेट हमारा जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि वी कॉल रैंडम फाउंडर्स फॉर हॉट सीट. लास्ट वीक ऑल्सो वी डिड सम हॉट सीट्स. So the idea of hot seat is a 60-second pitch. और 60-second pitch के बाद you as mentors, Sarfraz knows the drill. ये हमारे साथ पहले आ चुके हैं. So आपको मैं बता दूँ. So इसमें इसका drill ये है कि you have to rate these founders, their pitch. From 1 to 5, 3 is not included. So you could either rate them 1, 2, 4, or 5. 5 means you're ready to invest in that. They're so good, you're ready to invest. 4 is a good pitch, very little room of improvement. 2 is a bad pitch, and 1 is a very poor pitch. So yes, so you are either good or you're either bad. Average मतलब law of averages apply नहीं होता in the hot seats. So this is how so what we'll do is पहले ये pitch करेंगे, उसके बाद मैं आपसे स्कोर पूछूंगा, आप मुझे स्कोर बताएंगे, we're going to note down the scores, हम फिर बाद में इसको सिस्टम में ऐड कर देंगे, and then we'll see hot seat के लीडर्स कौन है. Guys ready for the hot seat? Virtual startups आज आपकी भी हॉट सीट होगी जैसे लास्ट टाइम हुई थी. सो आप इधर तैयार हो जाएं और मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि नेट खराब है या कुछ. ऑलराइट, सो ऑलराइट जी, सबसे पहले किसको बुलाया जाए? निम्रा आ जाए जी. Assalamu alaikum everyone, I'm Navera Waheed. Are you ready? So your time start now. So, hi, I'm Navera Waheed. I'm the co-founder and CEO of TeleAI. TeleAI is going to be a conversational AI platform, mainly for SMEs and small businesses who need help with customer service. So TeleAI will be powered with real-time sentiment analysis, data collection, analytics, and all of these things are going to help the businesses to grow. They're going to have a track record of how the
how their customers are behaving, and what do they have to say about their things, how is their service right now. It's going to save a lot of resources, as it is going to cut down the cost of the infrastructure and the 24/7 rotations and handling of the customer service agents, which is a huge drain on the resources for the companies. So it is mainly, so the product is mainly for the companies that have their customer service inbound, in-house, and that's what it's going to do. So this is mainly Tele AI. पहले score देना. So it was a very good pitch, but it's a 2 from my side. I'll explain later on. From your side, and sir, what do you after the next slide? So, I'll give 4. Now over to you after a feedback. 4 in sense के a lot of things what it will do उसके अंदर है, ठीक है, but still 5 पे इसलिए नहीं कि there is a little bit gap. हाँ हाँ, so for 4 is that yes, a lot of things are being told, लेकिन थोड़ी सी ambiguity भी है इसके अंदर, थोड़ी और clarity की ज़रूरत है, so that understand कि हाँ what I'm getting, what it is, and what will do, थोड़ा सा उसकी preciseness. That's my. Thank you for the feedback. अच्छा, so it was good pitch. ठीक है, आपने अपना product को अच्छा explain कर दिया. I think you dwelled a lot on explaining the value out of it. Mostly when you're talking to investors, they'll get it कि आप क्या बेच रहे हो, right? In the first, आपने शुरू में ही explain कर दिया था, and the later portion was I felt redundant. I think some of the important factors that you missed were your business model, the market size, what's the opportunity, and what makes you really stand out of all the other people who are trying to do this. I think those are the really important things where someone will actually get interested or actually not get interested in the product. So I missed out the unique selling point. Not just the unique selling point, the business model and the overall market size. How big is the market right now? And why do you see it as a huge opportunity, right? So, All right, thank you. I think the value or the problem that you're trying to solve, that's, I think, pretty clear to everyone. But जैसे ही AI, one of the main problems that it could have solved, जैसे generative AI, तो सब लोगों ने कहा customer support के लिए this can be a wonderful product, right? So I feel like with your product, you don't need to do a lot of explaining of the problem or the solution, but the opportunity in terms of the market size. क्योंकि देखो investor है ना, वो पैसे के लिए आता है आपके पास, ठीक है, वो और किसी reason से नहीं आता. अगर उसको नजर आता है कि you're gonna make money. Also, I'd like to understand where you are right now. आप अभी development phase में हो, आप ideation phase में हो. Are you already in the market? Do you have any clients or not? Right. We are in the development phase currently. Right. Perfect. So just put that in, and make it so promising कि एक investor अपना पैसा आपको देने के लिए तैयार हो. Make it so lucrative for them. Great, thank you so much. That was very helpful. अच्छा जी, so second startup, Zishan from Pul. Can you hear me? बुलाया तो अब खामोश आवाज नहीं आ रही. जी जिशान, आपको आवाज आ रही है? I think Zishan is not available. Momin. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. हाँ जी मोमिन, आर यू रेडी? Yes sir, I am ready. Okay, very good. चलें. So same drill.
it's 60 seconds. You have to pitch. After 60 seconds, Okay, over sir. to our mentors for. So your time starts now. Okay, my name is Mohammed Khan. I am the founder and CEO of Prosensia. At Prosensia, we believe in making life Moment, एक easier second. and दोबारा more से हम करते comfortable हैं. for Moment, everyone. hold Our on. mission is to Moment, design. moment, hold on. ये वहाँ पे Okay, एक sir, second. okay. Are you doing it? करो भाई. अच्छा. तो हम दोबारा से करें क्योंकि आवाज़ दरमियान में गायब हो गई थी आपकी. वो समझ नहीं आ रही थी. चलें. Your time Okay, sir. Now starts. clear? जी जी अभी क्लियर है. तो थोड़ा सा क्लियर बोलें क्योंकि वो वर्चुअल है थोड़ा Okay, सा. sir. Okay, time starts now. Okay, my name is Momin Khan. I am the founder and CEO of Prosensia. At Prosensia, we believe in making life easier and more comfortable for everyone. Our mission is to design innovative products that are simple to use, incredible, user friendly, and capable of turning your aspiration into reality. Our smart solution combine hardware with intelligent software to lower energy cost, reduce consumption, and minimize carbon emissions, creating a healthier, more sustainable future. With Prosensia, you don't just have to save on bills, you actively contribute to a greener planet. As we are more focusing on HVAC, so the market size of HVAC is more than $67 billion. We are currently working with one client. So that's all from my side. All right. Thank you. 57 seconds also. हालांकि वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था तो उसमें हम कुछ सेकंड्स और ऐड कर सकते हैं. जी सो सेम एक्सरसाइज. आप स्कोर इनको प्रेजेंट करने के बजाय आप वो बता दें क्योंकि ये वर्चुअल है. आप चलें आप मुझे बता दें. आई चल. So I'll give a 4. ओके चलें. 4 फ्रॉम यू एंड जी महमूद साहब 2 चलें. सरफराज आपसे स्टार्ट करते हैं. So the important thing that I liked about it was कि इन्होंने काफी सारे एस्पेक्ट जो कि डिलीवर करने चाहिए थे वो उनको कवर किया, which as an investor or anyone who's interested in your evaluating your startup, उनको आपने कवर किया. I think the way you explained the problem that you're solving and the solution can be refined a lot. उसके अंदर में हालांकि गुंजाइश काफी ज्यादा है कि आप उसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, and I really suggest you to please work on that. But overall, I think having an understanding of the market size, the fact that you already have a customer, I'd like to know if it's paying or not in the pitch as well. लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके आपके आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा value add कर रही हैं. That's why I given you a 4, but I'd really like you to work on the problem and the solution part of the pitch. थैंक यू. From my side, yes, it was very good. लेकिन वही जो पहला वाला पोर्शन है कि जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसकी जो एक्सप्लेनेशन उसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करने की जरूरत है. Yes, few things are very well covered, but it needs to be more segmented in a sense. ताकि उसको थोड़ा सा और बेहतर किया जा सके. हाँ, they have a client, but वो जो है कि which segment markets जो उन्होंने ओवरऑल मार्केट साइज बता दिया, but that is very good. थोड़ी सी और बेहतरी की जा सकती. ठीक हो गया. थैंक यू मोमेन. ऑलराइट. अच्छा जी. Thank नेक्स्ट you, sir. स्टार्टअप. ऑलराइट थैंक यू. ब्रेनस्टॉर्म. सारान. जी सारान आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी, I'm online today. I came to NIC, but I was not feeling well, so I moved back. कोई मसला नहीं. आप are you able to pitch hot seat? Yeah, I think I should try. Yeah, definitely you should try. Why not? ठीक हो गया. चलें जी. 60 seconds. So are you ready? Yeah. Okay, so your time starts now.
Assalamu alaikum. My name is Saran Khalik with 5 years of experience in artificial intelligence robotics field. What we are doing is my company is developing indigenous robotic kits for educational institutes to solve the inaccessible robotic education in multiple universities and K-12 STEM businesses. So currently we have conducted 3 STEM boot camps and sold 3 of our robotic kits to Emerson College, University Multan, to their computer science department. And currently we are in process of making robotic arm for a company, Robotisim, who is having global clients in India, Egypt, and USA and UAE. So they have demanded some robotic kits that can support their curated course. And we are also in deal with or one of our miniature robot with the same company to get on board Time on is their up. platform. Yeah, thank you. I'm also done. Thank you. Thank you. G, So same exercise. it's a 2 from my side. All right, it's a 2. जी sir. 2 from your side. Okay. चलिए आपसे ही start करते हैं. Feedback, any feedback? उसका सरफराज. अच्छा, जो अगेन आई विल से कि जो इसकी कंपोजिशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चैलेंज जो एड्रेस हो रहा है अगेन पहले था कि ठीक है व्हाट इज द मार्केट साइज, किसको चैलेंज कर रहे हैं, किस तरह उसको एड्रेस कर रहे हैं. कुछ चीजें एड्रेस हुई हैं बट कुछ चीजें जो इसके अंदर से मिसिंग है, व्हिच नीड्स टू बी रिफाइंड. ठीक है. Thank you. So one thing that you need to understand कि ये जो मार्क्स हम दे रहे हैं आपकी पिच को दे रहे हैं, आपके बिजनेस को नहीं दे रहे. And I understand. yeah, so I think when you're pitching, आपका प्रोडक्ट जो है ना या आपका स्टार्टअप बड़े अच्छे तरीके से पोजीशन हो सकता है differently from the way you're positioning it right now, right? And Okay. I think that you should do a lot of work on making it sound really very impressive. Okay. आपने अभी प्रॉब्लम और सोल्यूशन थोड़ा सा डिफाइन किया ना कि एक्सेस टू किट्स इज प्रॉब्लमेटिक. आई थिंक इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर बिजनेस मॉडल एज वेल, एंड आई लव टू अंडरस्टैंड दैट. Yeah. वो भी आप पिच में नहीं कवर कर सके. Yep. So yeah, I mean, from my side, problem solution I think can be positioned in a dramatically different way, which creates a dramatically different experience and perception of your startup. Number Okay. 2, I think the business model needs to be very well explained. The market size, most importantly, has to be very well explained. As an investor, I'm looking कि मैं Okay. पैसे कैसे बनाऊंगा और कितने बना सकता हूँ. And I Okay. think you need to Okay. work a little bit on the preparation of the pitch so that it ends in time as well. So I think all these Okay. इन पे काम थोड़ा सा कीजिएगा. I think it's a wonderful startup that you're working on. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. हाँ जी, तो वो वर्चुअल हो गए. Let's take one. Right करें. Hello. Ready? Yeah. Okay. Time starts now. Ladies and gentlemen, I am Hassan. I am the founder of Ride Karo and Manzil Maps, and we are planning to launch Ride Karo on 9 December 2024, inshallah. So Ride Karo is a commission-free ride-hailing service, which means that it completely removes the platform fee that you pay right now to these 3 companies in Pakistan. What that means is that your ride cost automatically comes down by 15 to 20%, which is a very big advantage to daily commuters. And how we are planning to earn from it is a very simple platform fee of 10 rupees per ride or 50 rupees per day, which is agreed by customers and drivers both. And our revenue model is also based on acquiring a large driver fleet of around 100,000 drivers in like 1 year, which would give us a good amount of revenue. And so far, we have onboarded 500 drivers as well. The current market for Ride Karo is $0.73 billion right now in Pakistan, projected to grow to $1 billion by 2029. Thank you. There's a 4 from my side. 4 from my side.
So I know your product. I was one of the judge when you presented. I just feel like कि किसी भी बंदे के लिए from an investor's perspective, I think it is catchy enough to listen to you and have another talk to you. Your pitch was good. एक उसके बाद it was well prepared as well. But थोड़ा सा जो आपका secret sauce है ना, that how you are reducing that cost. I think that उसको अगर थोड़ा सा ऐड कर लो अपनी pitch के अंदर, it can become much better. ठीक है. Apart from that, I guess, yeah, something you need to dwell upon that a little bit because you had sufficient time, right? And he finished it well before time. So I think उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से explain करो कि यार what are the gaps in the market that you've identified, how you've identified that, and how you've addressed them, right? I think that will make your pitch really solid. Thank you. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा और बेहतर कर लें. प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो बाकी बिजनेस मॉडल को ये दो चीजें हैं मेजर, जिसको अगर आप थोड़ा बेहतर करें तो इट्स मच बेटर. थैंक यू. Thank you. All right. So last pitch of the day. बुलाया जाए. अच्छा, आप खुद आना चाहते हैं? आ जाओ. So we have Ahmed from Teen Musafir. नहीं देख के नहीं बोलते आप. नहीं ठीक है, आप टेस्ट कर सकते हैं लेकिन आप देख नहीं सकते. रखें अपने. हाँ रखा हमारे लिए अभी टाइम नहीं रखे. Already? Yeah. Okay, time starts now. So my company, Teen Musafir, is building a community platform that is going to help the youth, that is currently helping the youth to connect over shared interests by going on trip. We believe that travel is the best way for making people bond, and that's how we're creating a community. Why we're doing this? Because Gen Z and millennials, since it's a youth-based community, so Gen Z and millennials now value experiences over material things, and that is what we're providing. We're providing them trips which include theme-based trips, that is yoga and wellness, adventure, party-based, and also the last category is detox-based. So we connect people from all over the country into specialized theme-based trips, and that's how we form and build that community. What I'm looking for is organizations and individuals who can help us build, nurture, and monetize this community. It's 2 from my side. Mm-hmm. You want me to give feedback? 2 from my side. अच्छा ये so good. ठीक है, अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आपने डिलीवर किया माशाल्लाह. दैट वाज रियली नाइस. इट्स जस्ट दैट के थोड़ा सा फॉर्मेट फॉलो करने की कोशिश करो तो आई थिंक इट्स गोना मेक इट इजियर. प्रॉब्लम, solution, how you're solving it, how big is the market, how much will you be able to make, and how you'll be able to make that. 5-6 चीजें हैं बस, इससे ज्यादा कुछ भी. बाकी स्टोरी ना. और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ना, मैं ये चाहूंगा किसी बंदे को अपनी बात समझानी हो, सबसे अच्छा तरीका होता है कुछ कहानी सुनो. I would suggest, now this is just a suggestion, take it or leave it. मतलब तुम्हारी मर्जी है. मैं प्रोडक्ट सुना तो मेरा दिल किया कि मैं तुम्हें कहूँ कि यार इसको स्टोरी की बहुत ठीक है. Yeah, this is the story. So that the end, the person who's listening is able to understand what you're trying to say, right? And then just वो उसी स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम भी समझ जाए, उसी स्टोरी के अंदर आपका सोल्यूशन भी समझ जाए, and then directly move towards the market. Actual पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, what's the opportunity size, and how much would you be able to make out of that, and how would you, मतलब रेवेन्यू मॉडल होगा क्या, आप इवेंट कराओगे, लेके जाओगे,
So what's your cut in all of that? ठीक है। How you are making money out of it? So वैसे generally it's 16,000 is our ARPU and it's a 3.2 million. There's that's a आपको attainable already market. ARPU है. हम्म। That's nice. So pitch के अंदर वो highlight होना चाहिए था. अच्छा You're है। already in business. You already conducted so many trips, so many events, so many whatever, and so you missed all of that. And I think that जो भी बंदा अच्छा बिजनेस कर रहा होता है उसको पिच के अंदर उसके नंबर्स तो लाजमी डालने चाहिए, क्योंकि ठीक है। बाकी बेशक फ्लफ हो, नंबर्स जो है वो आई थिंक नंबर से ही आप वो क्वांटिफाई कर बिल्कुल सकते हैं फिर। मतलब आपको ऑल ऑफ अ सडन अटेंशन ग्रैब कर लेते हो आप उसकी कि अच्छा इतना बिजनेस कर रहा है, इतना अच्छा, इसका इतना आरपू है। सो सो अगर कोई सोया भी हुआ तो कहेगा अच्छा यार तो दोबारा बताना मुझे एक दफा ये क्या, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। राइट? So for anyone who's actually in business right now, मतलब in business का मतलब in market making money, so the numbers have to be there, right? Thank you. I hope you get some out of what my feedback is. Five steps. और इसमें जो छठी चीज add आप कर सकते हो, which will really make it stand out, कि why is it you who can do it better than anyone else in the market? Say for example आपका कोई I even have an answer for that. yeah, I will just include. add that. Just add. हाँ मैं वैसे good. Just add that. ठीक है। Thank you. मैं तो सोचिए कि यार इसको थोड़ा सा वही बेहतर segmentation, because now you guys have like a lot of good tools as well. वो properly segmentation इस तो might be कोई prefer format भी होता है कि क्या क्या चीजें जो इस 5 6 7 चीजें जो mix होनी है, that should be expressed in this. तो उसको थोड़ा बेहतर segmentize करो. Market segment आप कह रहे हैं? नहीं, इस total pitch segmentation, pitch हाँ, segmentation. ठीक है। कि इसके अंदर जो है एक चीज जो है बहुत ज्यादा वो थी क्या कहते हैं एक्सप्लेन थी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर से मिसिंग थी, तो इसको थोड़ा सा उस तरह से। थैंक यू। ओवरऑल गुड जॉब एज फार द हॉट सीट्स आर कंसर्न। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं हॉट सीट पे एक फीडबैक दूंगा, वो ये कि आप लोग के असाइनमेंट का हिस्सा है हॉट सीट। किसके साथ हॉट सीट वीडियो रिकॉर्ड कराइए, ठीक है? सो इफ़ यू हैव रिकॉर्डेड दैट तो यू नो द फॉर्मेट। अगर आपको फॉर्मेट का पता है, बस आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली वन यू कम इन पर्सन फॉर हॉट सीट यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। So practice, it's all about the practice. We'll also be starting the pitching sessions also from next week onwards. So उस पे हम फिर बाद में बात करेंगे. For now, I would like to invite our first speaker of the day, Mr. Mehmood Lodhi here with us. Sir, please come in on the stage. And from यहीं पे हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, तो यहाँ पे मैं I will just place a seat over here. You can have a seat. गैस हमारे 2 4 पॉइंट से जो है ना उससे आपको कुछ वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स एन एफर्ट, एंड जब आप लोग एफआई का पार्ट है और जिस तरह भी जब तक ये बाकी सेटअप करते हैं चले तो जो प्रोसेसेस को फॉलो करना होता है, बिकॉज जब भी हम किसी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, और अगर आप लोग इस सिस्टम का एक पार्ट बने हैं, तो एक प्रोसेस है, ठीक है? अगर हम लाइक ओवर द पीरियड जब हम आपकी एज पे थे, जो है जब व्हेन वी वर यंग वी स्टार्टेड, तो हमें एक नेचुरल एक होता है कि यार मुझे सिस्टम को फॉलो नहीं करना, मुझे सिस्टम से बाहर रह के कुछ करना है, ठीक है? लेकिन जो सिस्टम डेवलप हुए हैं ओवर द पीरियड, जो है ये दुनिया ने एक्सपीरियंस का, जिस तरह एफआई है, तो एफआई का एक पूरा एक्सपीरियंस है जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने ये प्रोसेसेस, ये डॉक्यूमेंट्स जो है उसको जो है डेवलप किया है, विच एक्चुअली हेल्प अ लॉट लॉट ऑफ फाउंडर्स कि आप लोग जो है सक्सेसफुल स्टार्टअप किस तरह खड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज लाइक आई कनेक्टेड विद दिस स्टार्टअप सेटअप बैक इन 2007, जबकि पहला स्टार्ट हुआ था नस्ट का पहला था, तो आई वाज मेंटोर देयर। तो उस वक्त जब हम लोग आए थे तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था
ठीक है, वी केम फ्रॉम द इंडस्ट्री, और हम लोग जो है अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे और जो है सब जो है, तो दैट वाज, बट नाउ थिंग्स आर वेरी मेच्योर। और आज की तारीख में जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, लाइक एआई जो है ना, उसकी इंक्लूजन हर चीज के अंदर जो है वो आ चुकी है। लाइक एआई वुड बी नेक्स्ट आईटी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। जिस तरह जब हम लोग आए थे तो आईटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी हर चीज में आएगी। सो सेम गोज फॉर नाउ, एआई विल बी टचिंग एवरी पार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। So I'm Mehmood Lodhi. So I'm by profession, I'm an IT sales professional, and I am promoting this as a career as well. It's first time, and it's been 25 years in the industry. I'm selling solutions all over Pakistan region. So it's been like long time in the industry. So what are we doing? मैं थोड़ा पीछे देखता भी रहूंगा, ये पता चले कौन सी चल रही है. So I have just launched another startup, which is like ITSCH, is an educational, which is Information Technology Sales Elite Academy, and where we are training next generation of IT sales experts. That's what we are promoting. So this is what I mostly do in my talks. So it's a mantra of 3. So everybody who's present, we need to shout 3, and then we need to do 3 claps, but we need to try to do it synchronized. Okay, and we'll repeat it 3 times. Ready? Okay. So 1, 2, 3. 3 claps. 1. So again, 1, 2, 3. Good one. So we'll try to synchronize it. So 1, 2, 3. Very good. So this mantra is mostly, I try to do it for commitment, consistent, and collaboration. So everyone who is here is not for anyone. It's for themselves. So it's commitment to yourself. So you are here. So you are committed to yourself. You want to do something first for yourself, then for others. Then consistency. Whatever you have started, be consistent so that this will develop in the long run, your habits. And collaborate. Collaborate with each other. थोड़ा सा वो होता है कि हम लोग उस तरह से आदी नहीं होते कोलैबोरेशन के, क्योंकि हमें कम्पिटिटिव जो है वो ज्यादा होता है, बट इवेंचुअली कोलैबोरेशन जो है वो ग्रोथ में ज्यादा बेहतर रोल प्ले करती है. तो दिस इज अ वेरी फेमस फार्मूला कि दुनिया की बहुत से अच्छी प्रोडक्ट्स एवरेज सेल्स टीम के साथ और एवरेज प्रोडक्ट्स अच्छी सेल्स टीम के साथ डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट करती है. सो आपकी जो है अच्छी प्रोडक्ट है, आपकी सेल्स टीम सही नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दोज रिजल्ट्स. ठीक है. और अगर आपकी जो है टीम बहुत अच्छी है, ठीक है, यू विल बी एबल टू क्रिएट गुड रिजल्ट्स. सो जब हम बात करते हैं कस्टमर डेवलपमेंट की, तो कस्टमर डेवलपमेंट का एक साइकिल है, एक प्रोसेस है विच वी हैव टू फॉलो. ठीक है. पहला तो जिस तरह आपकी जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगी, कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, कोई सर्विस नहीं बनेगी, मार्केट सेगमेंटेशन नहीं होगी, तो हम किसको देंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. बट वंस यू गो टू द कस्टमर, तो कस्टमर डेवलपमेंट के लिए पूरे स्टेप्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं, और ये ओवर द पीरियड डेवलप हुए हैं. डेफिनेटली अनदर स्लाइड विल गिव इट परसेंटेज भी वेरी करती है कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं. सो सबसे मेन चीज कस्टमर डेवलपमेंट में है, जिस तरह भी हम लोगों ने पिच सुनी कि अच्छा ठीक है, हमारा ये सोल्यूशन है जो ये चैलेंज एड्रेस कर रहा है, और इससे जो है हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे. बट व्हेन वी गो टू द कस्टमर्स, तो कस्टमर्स के लिए तो मेन चीज होती है कि हम कौन सा चैलेंज एड्रेस कर रहे हैं कस्टमर का. इफ आई एम अ कस्टमर, जिस तरह सबसे लास्ट पिच थी, द पर्सन इज डूइंग द टूरिज्म और इंटरेस्ट बेस्ड टूरिज्म. ठीक है. या उससे पहले द पिच वाज के एआई बेस्ड solution for SME sectors. So these are the solutions. But जब आप किसी कस्टमर के पास जाएंगे तो सबसे पहले कस्टमर प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है. तो कस्टमर प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि कस्टमर जो है 2 टाइप के, एक है आपका रेपिटेटिव, एक है वो हिट एंड रन, कि आपने एक दफा बेचा, उसके बाद यू डोंट वांट टू सी द कस्टमर अगेन. बट देयर आर
क्या कहते हैं कस्टमर, तो आपकी रेपिटेटिव कस्टमर, लॉन्ग टर्म कस्टमर जो है वो रिपीट हो रहे थे। अगर आपकी बात करें तो जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टूरिज्म है, तो डेफिनेटली द पीपल विल द रिपीटेड द रिपीटेटिव कस्टमर दे विल कमिंग बैक टू यू। सो कस्टमर एक दफा जो पहली दफा जो डेवलप होता है, अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती तो वो वापस नहीं आता। कस्टमर, हम खुद सब जो है कस्टमर्स हैं, ठीक है। हर बंदा किसी न किसी सी चीज का, आप कपड़े लेने जाते हैं, शूज लेने जाते हैं, बाकी चीजें लेने जाते हैं, यू आर अ कस्टमर। सो जब आप जाते हैं तो आपको वैल्यू नहीं मिलती, आप दोबारा रिपीट आप नहीं जाते हैं, ठीक है। सो मेरी मार्केट सेगमेंट क्या है, मैं कहाँ पे बेच रहा हूँ, ठीक है। उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद उसकी सेगमेंटेशन जो है बहुत जरूरी है। सो कस्टमर डेवलपमेंट में केवाईसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है। हमारे यहाँ केवाईसी डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद एक्सरसाइज की हो। कितने लोगों ने जो कॉफी शॉप एक्सपेरिमेंट किया हुआ है अपने स्टार्टअप्स का, या आइडिया है कॉफी शॉप एक्सपेरिमेंट का? अच्छा, आपने किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो दैट इज कॉफी शॉप एक्सपेरिमेंट। कि आप जो है यू वांट टू वैलिडेट योर आइडिया, तो आप कॉफी शॉप पे जाके यू गो एंड यू आस्क पीपल के ठीक है हम इसको जो है, अब मेरा ये आइडिया है। ये मेरा मेरा जाती एक्सपीरियंस है। जो हमारे बाकी स्टार्टअप्स हैं, जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, दे विल बी टेलिंग, दे माइट बी सेकंड ऑन दिस, कि आपके जो सबसे पहले कस्टमर्स जो होते हैं ना, वो स्ट्रेंजर्स होते हैं। आपके फ्रेंड्स फैमिलीज आर नॉट योर फर्स्ट कस्टमर्स, ठीक है। सो जो जब मार्केट सेगमेंटेशन हो रही होती है या आपको प्रोडक्ट की वैलिडेशन हो रही होती है, तो वो सारे वो लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते, हु आर लाइक फार अवे फ्रॉम यू गाइस। तो मार्केट सेगमेंटेशन, तो वैलिडेशन के बाद जो है आपका ये कि मेरी प्रोडक्ट जो है किसको बिकेगी, कहाँ पे बिकेगी, कितने की बिकेगी, ठीक है। तो केवाईसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये पता है कि यार इस बंदे को मैं ये वाली प्रोडक्ट जो है रिपीटेटिव बेच सकता हूँ, या इज अ वन टाइम कस्टमर। बहुत साल पहले जो है लाइक जो स्टडीज हैं वॉलमार्ट का था, तो उन्होंने जब अपनी लॉन्ग टर्म जो है कस्टमर्स जो क्रिएट किए थे, तो देन दे केम कि अच्छा जी कस्टमर की इंफॉर्मेशन, उसकी बर्थडे की इंफॉर्मेशन, उसके बच्चों की इंफॉर्मेशन, सो दे ताकि कनेक्ट रह के दे ब्रिंग द कस्टमर रेपिटेटिव, कि कौन सा कस्टमर जो है वो वापस आते रहे। सो केवाईसी कस्टमर डेवलपमेंट के अंदर जिस तरह मार्केट सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है, उसी तरह केवाईसी भी बहुत जरूरी है हमारा। अच्छा, दोनों सूत्रों में केवाईसी इन आप लोगों के मोस्टली जो अभी तक सुने हैं, एक जो था वो बी टू, एक दो दो बी टू बी थे, बाकी बी टू सी है, आई थिंक बी टू सी। सो बी टू बी एंड बी टू सी दोनों का थोड़ा सा वे ऑफ कस्टमर एंगेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट अगेन जो केवाईसी है वो दोनों सूरतों में आपके पास होना चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जो मेरा कस्टमर है उसके डेमोग्राफिक्स क्या। बिकॉज हम लकीली दुनिया के बहुत ही अच्छे से मुल्क में रहते हैं, ठीक है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनको शायद जिंदगी में दूसरा वेदर भी नहीं पता हो, ठीक है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने दूसरा वेदर भी नहीं देखा होता। हम तो हर 3 महीने बाद हमारा वेदर चेंज हो रहा होता है। हमारी बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अगर बनाए तो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वो हो सकती हैं। सो हम उस हिसाब से बहुत डिफ्रेंशिएट है। तो हमारे यहाँ अगर हमारे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, दे कैन बी कॉपीड इन डिफरेंट रीजन्स, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। सो तो आपका जो अगेन केवाईसी, जो कस्टमर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कस्टमर डेवलपमेंट में सबसे पहले अगेन प्रोडक्ट है, कस्टमर सेगमेंटेशन है, और फिर जिसने बेचना है। मेरा ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, हो सकता है अभी चेंज भी हो गया हो, कि मोस्टली जो हमारी टीम्स होती हैं, जो फाउंडर होता है, क्योंकि डेफिनेटली वो माइंडसेट डोमिनेट करता है कंपनी को, कंपनी कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को। इफ startup owner is, or जो lead है, he is from the tech, the startup will be from the tech mindset. If it's from like from the HR, if from finance, from marketing, so those mindset dominate. But as you are here at FI, which are helping you to take care of all the segments,
product development is very important aspects, but as well as the processes, the development or sales, and especially the sales team. So this is also very important aspect of this. जब भी है टाइम हो गया अच्छा ठीक है और ये वाला तो जो हमारे लोग मिस करते हैं हम ओवरऑल मिस करते हैं बिकॉज नाउ इन लास्ट 25 years पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स फ्रॉम डे हम जीरो से भी स्टार्ट किया और अच्छा खासा तो जो हम जिस चीज पे लैक कर रहे होते हैं वो होता है प्रोसेसेस डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स डेवलप होती बिकॉज आवर माइंड्स आर वेरी फर्टाइल वी हैव वेरी अमेजिंग आइडियाज वी हैव वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट्स लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में मार खा रहे होते हैं वो होते हैं हम प्रोसेस डेवलपमेंट पे प्रोसेस फॉलो पे और ग्रोथ पे कस्टमर हम ले आते हैं लेकिन उसको क्योंकि हमारा प्रोसेस नहीं होता कस्टमर एक दफा आ जाता है दूसरी दफा हम उसको कभी भी हम उसका ख्याल नहीं रखते तो कस्टमर हम स्किप कर जाते हैं तो मेन चीज आप बहुत अच्छा स्टार्टअप डेवलप करें बट एट द सेम टाइम और अब तो आप लोगों के पास जिंदगी में बहुत आसानियां हैं हम तो मैं अपने आप को कहता हूँ पत्थर के दौर के लोग हैं भाई जब जो है क्या कहते हैं सारा कुछ खुद करना पड़ता था जो है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब कुछ खुद से लिखना पड़ता था सोचना भी पड़ता था ठीक है अब तो थोड़ा सोचना पड़ता है थोड़ा जो है कुछ हेल्प हो जाती है उस वक्त तो गूगल भी नहीं था व्हेन वी स्टार्टेड ठीक है तो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स बट और फिर आप लोगों के पास केस स्टडीज भी बहुत सारी है सक्सेस स्टोरीज एक और यानी अगर आप देखें तो दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट अगर आप है जो टॉप पे चल रही है अगर उसका रेप्लिका भी आएगा तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा कितना अच्छा वो चलता है ठीक है देयर आर केस स्टडीज जहाँ पे लोगों ने जो है डिफरेंट कंट्रीज से टॉप लीडिंग प्रोडक्ट्स उठाई हैं उनका रेप्लिका अपने मुल्क में क्रिएट किया है एंड दैट्स वर्किंग वेरी परफेक्टली ठीक है लेकिन अगेन उसके अंदर सिस्टम्स और प्रोसेसेस को बहुत अच्छा तरह से उसके अंदर बिल्ट इन किया है ठीक है क्योंकि अब तो बहुत सारी केस स्टडीज देयर इज लाइक अ बुक कॉल्ड जुगाड़ इनोवेशन किसी ने अगर पढ़ी है तो अच्छा सो जुगाड़ इनोवेशन सो गुड ओके आई गॉट वन देखिए अच्छा so जुगाड़ innovation so they like now they have like the 3 version so they brought in के BRICS जो है which is like Brazil Russia India China और तो उन तमाम मुल्कों में अगर कोई भी प्रोडक्ट या आइडिया एक मुल्क में सक्सेसफुल है तो वो बहुत थोड़ी सी वेरिएशन से किसी भी दूसरे मुल्क में सक्सेसफुल हो सकता है हम बहुत दफा हमेशा बहुत ही ब्रांड न्यू चीज लाने के चक्कर में होते हैं ठीक है और ब्रांड न्यू चीज ले लाएंगे चलेंगे चलाएंगे आगे लेके जाएंगे कितनी सक्सेसफुल होगी वो हमारी सारी जर्नी होती ठीक है जबकि दूसरी सूरत के अंदर जब हम लेकर आते हैं कोई चीज तो उसके अंदर आधी जर्नी कवर होती है ठीक है बट अगेन ऑल दीज पॉइंट्स के ए वट एवर यू आर डूइंग प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट customer development customer acquisition and customer retention is not a challenge again if we don't have processes which will be followed we will miss our customers हम उसको दोबारा से उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे उसको रीएक्वायर नहीं कर सकेंगे ठीक है सो प्रोसेसेस आर आई ऑलवेज से कि प्रोसेसेस आर द कोर इंपॉर्टेंट लाइन चली गई चलो सो नेक्स्ट वाज के जो प्रोसेसेस है सेल्स के उसमें परसेंटेजेस थी starting from prospecting is around 15 to 20%. So, so this is like customer development. हमें सबसे पहले यही होता है कि जब हमने स्टार्टअप बना लिया है हमारा क्योंकि बहुत अच्छा होता है कि जब हमारा आइडिया बहुत अच्छा है और हम बेचेंगे इस तरह कुछ लोगों ने 1-2 कस्टमर ले भी लिए हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज या क्या कहते हैं एग्जांपल्स होंगी कि बहुत अच्छी केस पढ़े और अभी तो शायद लोकल भी केस स्टडीज भी पब्लिश हो चुकी हैं जो स्टार्टअप्स की सो यू कैन एक्चुअली फाइंड आइडेंटिफाई सो कस्टमर डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्ट तो बना ली प्रोडक्ट बहुत अच्छी डेफिनेटली आप कोई ना कोई चैलेंज एड्रेस कर रहे हैं तभी तो प्रोडक्ट बनाई है तो उसको कस्टमर को एक्वायर करना और उसको मेंटेन करना उसके ऊपर वंस यू थिंक
you will have successful customers. चलो ठीक है. तो दिस इज अगेन कि ये ही जो परसेंटेजेस हैं, इट्स अगेन सम बेस्ड ऑन गुड प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कि आप जो किस फेज में होते हैं, तो कितने परसेंट जो है आप उसको काउंट करते हैं कि जी ये जो है हम कहाँ पे खड़े हुए हैं. और शुरू में जब हम लोग इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करते थे, इंक्लूडिंग IBM और ओरेकल और ये लोग, तो जो हमारी क्वार्टर कॉल्स होती थी, QBRs जिसे हम कहते हैं, या वीकली मंथली कॉल्स होती थी, तो हम लोग शुरू में तो बहुत इसके ऊपर वो होते थे कि यार ये क्या मुसीबत है. हर दफा वो पूछते हैं कि भाई ये जो कस्टमर के साथ कहाँ खड़े हो, कितनी मीटिंग्स की हैं, किस परसेंटेज पे हो. तो बट ओवर द पीरियड वी केम टू नो कि इसकी एक अपनी एक वैल्यू है जो कि हेल्प करती है आपको रियलाइज एज अ बिजनेस ओनर, आपको ये रियलाइज करने में. आप, क्योंकि ये हमारी कस्टमर डेवलपमेंट का सेशन है, बट इफ यू लाइक द फोरकास्टिंग, फनलिंग, कि हम अपने साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितने परसेंट हमारी सक्सेस रेशियो होगी, हम जो कमिट कर रहे हैं कि जी हमारा साल का रेवेन्यू $1 मिलियन होगा, वुड वी एबल टू अचीव इट और नॉट. तो ये सारी चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करती हैं. बट इट स्टार्ट फ्रॉम जो आज का टॉपिक है, विच इज कस्टमर डेवलपमेंट. सो कस्टमर डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन, राइट. सो लाइक आई ओपन दिस फ्लोर फॉर क्वेश्चन. कस्टमर वो बाद में होंगे या इसके साथ ही? अच्छा, ठीक है. सो ठीक है, फिर हम जो क्वेश्चन आंसर इसके बाद करेंगे. सो आई विल हैंड ओवर टू द नेक्स्ट जो है स्पीकर. थैंक यू. आप खड़ा हो, जिसको थोड़ा पीछे करते हैं, खड़े हो जाइए, मैं तो घूम घूम के जरा थोड़ी ब्लड फ्लोइंग रहता है मेरा. हाँ हाँ, ठीक है. उसके लिए ओके, ठीक है, ऑल सेट. चल, कामरान का नेक्स्ट स्टार्ट है. थैंक यू सो मच. सो यू ऑल नो मी, सरफराज. तो और करीब करो, बस परफेक्ट. चलो. So before we dive deeper into customer development, there are a few terms just I want to ensure कि आप सबको इनके बारे में पता हो. वैसे तो मुझे काफी उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट इन केस अगर कोई बंदा जिसको इनका आइडिया ना हो, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ. कुछ गपशप भी लगा लेते हैं इसी बहाने आपके साथ. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है? यस प्लीज. Yeah, perfect. Perfect. So, so as a startup, we've got limited resources, we've got limited time, and by default, हम एक ही प्रॉब्लम को किसी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. और इस चीज को जज करना कि द प्रॉब्लम इज बिग इनफ एंड द सॉल्यूशन दैट आई एम प्रपोजिंग is going to actually solve the problem and someone's actually going to pay for it. So
ये इस चीज को फिगर आउट कर लेना कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, उसके लिए जो चीज बनाई जाती है उसको कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. सो यू हैव अ लिस्ट ऑफ फीचर्स इन योर माइंड एंड यू ट्रिम देम डाउन टू द वेरी बेसिक. ये जी बस मेरा किसी ना किसी तरीके से काम हो जाए विदाउट अ लॉट ऑफ एफर्ट, मेरा जो हाइपोथेसिस है वो वैलिडेट हो जाए कि दिस इज अ प्रॉब्लम एंड पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू पे फॉर अ सोल्यूशन. तो स्ट्राइप ने जब लॉन्च किया, स्ट्राइप एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग जानते होंगे, तो उनके फाउंडर्स मैनुअली जाके पेमेंट इंटीग्रेशन उनके पास करते होते थे. तो दैट वाज देयर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. ठीक है जी. कुछ भी नहीं होता था. अभी तो आप जाते हो स्ट्राइप के ऊपर अकाउंट बनाते हो एंड द इंटीग्रेशन इज 1 2 3, राइट. व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ, ए मिलियन बिलियन डॉलर प्रोडक्ट है, उन्होंने नहीं सोचा कि मुझे इसको कंप्लीट ऑटोमेट करने की जरूरत है. आपके पास रिक्वेस्ट है मुझे पेमेंट इंटीग्रेशन चाहिए, वो क्या करेगा, वो जाएगा अपनी टीम के साथ या अकेला जाएगा फाउंडर और जाके उधर मैनुअल इंटीग्रेशन करके आ जाएगा. प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है फाउंडर की, वो ही इज रेडी टू पे फॉर दैट. एंड उसने इस अपनी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको भी टेस्ट कर लिया कि पीपल आर रेडी टू पे फॉर पेमेंट इंटीग्रेशन. सो व्हेन यू थिंक अबाउट एमवीपी, आई वांट यू गाइस टू कीप दिस इन माइंड कि ये एमवीपी था स्ट्राइप का. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू गाइस. नो ऑटोमेशन, इट्स अ टेक प्रोडक्ट and someone actually goes in and delivers the service, right? So it's really contrasting, but that's the way minimum viable products are. So next is product market fit. Who knows what product market fit is? जी जी जी, perfect. So you built an MVP and you defined some KPIs. आपने कहा कि अच्छा ये मेरा प्रोडक्ट है, अगर मैं इतना बेंचमार्क को हिट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ यूजर्स, इतना रेवेन्यू को हिट करता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ द मार्केट इज रेडी फॉर माई सोल्यूशन, द मार्केट इज पेइंग फॉर इट, राइट, एंड दे रेडी टू अडेप्ट माई सोल्यूशन. सो एक प्रोडक्ट को इस फॉर्म में लेके आना कि द मार्केट एक्सेप्ट्स इट, कहती है कि हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर रेडी टू पे फॉर, दैट इज प्रोडक्ट मार्केट फिट. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम an idea stage getting to the product market fit stage. And the last thing that I want to ask you guys is, what is a tech product? Anyone? We've got a product. The shampoo is a product, right? This mic is a product. Camera is a product. What is a tech product? Anyone? Good, good. Anything else? You identify the need and you develop the tech product. Good, good. Anyone else? Okay. Good, good. Nice, nice. G. For the automation of business, we include technology. Good, good. Anyone else? G. बिल्कुल बिल्कुल ठीक. So in FI we endorse tech. ठीक है. टेक प्रोडक्ट क्या होता है? टेक प्रोडक्ट एक नॉर्मल प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है, और जो मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अ नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड अ टेक प्रोडक्ट है कि जब आप इस प्रोडक्ट को स्केल करते हो, जब इसको आप मासेस तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है या मिनिमल इन्वेस्टमेंट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सो आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ से फॉर एग्जांपल माइक्स. ठीक है. अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो मुझे इसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट जगहों के ऊपर बनानी. इसके बैक एंड के ऊपर मुझे फैक्ट्रीज चाहिए होंगी जो कि इसको मैन्युफैक्चर करेंगी. फिर मुझे उसका एक प्रॉपर जो है वो डिलीवरी का सिस्टम चाहिए होगा, सप्लाई चेन चाहिए होगी. मुझे इसके ऊपर एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए होंगे, रिटेलर्स चाहिए होंगे, और इवेंचुअली ये प्रोडक्ट आपके हाथों में पहुंचेगा. नाउ थिंक अबाउट व्हाट्सएप, फेसबुक, स्लैक. इन प्रोडक्ट्स के बारे में सोचें. फेसबुक ने एक दिन डिसाइड किया कि मैंने अमेरिका से मूव आउट करके यूरोप में लॉन्च करना है. उसकी क्या कॉस्ट? उसने कोई नई फैक्ट्री नहीं लगानी है, उसने कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं इस्टेब्लिश करना है, उसने कोई नए रिटेलर्स के साथ नहीं बात करनी. उसने ऑल ऑफ अ सडन अपने सर्विस की कैपेसिटीज बढ़ानी है और मार्केटिंग कैंपेन वहां पे रन करनी है, एंड दे आर एबल टू स्केल वेरी वेल. सो
the main differentiating factor from a tech product is a jargon. ठीक है जी, टेक प्रोडक्ट उसको कहते हैं जिसको स्केल करने के लिए आपको बहुत मिनिमम एफर्ट, विद मिनिमम एफर्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट यू कैन स्केल। और जो एक इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर्स टेक प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जब वो प्रोडक्ट मार्केट पे अचीव कर चुके। अगर एक प्रोडक्ट ने प्रोडक्ट मार्केट पे अचीव कर लिया एंड इट्स अ टेक प्रोडक्ट, नाउ ही नोज कि इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो रेवेन्यू में ग्रोथ है, इसकी जो कंज्यूमर में ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल, लीनियर नहीं। ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्री जितनी भी है हमारी, वहाँ पे आपके पास कभी भी एक्सपोनेंशियल, बट द प्रोडक्ट्स लाइक Amazon, Facebook, WhatsApp, these have exponential, and that's why we as founder institute endorse tech. So with the basis there, if anyone has any questions, I'll move forward very quickly now. तो अगर किसी का इसके बारे में कुछ पूछिए, सब क्लियर हो गया जी? ठीक है, ओके। So traditionally क्या हम लोग जब प्रोडक्ट कोई बनाते हैं, this is the way we develop products. अपनी कहानी बताते हैं आपको। जब मैंने पहला प्रोडक्ट अपना किया टॉक हेल्थ, तो एक प्रॉब्लम थी जो कि हमने आइडेंटिफाई की, which was कि यार अच्छा डॉक्टर नहीं, ठीक है। एंड वी स्टार्टेड विद अ सिंपल लिस्टिंग। एक जेन में एक आइडिया आया कि यार एक डॉक्टर्स की लिस्टिंग बना लें जहाँ पे हम डॉक्टर्स को रिव्यू कर सकें, देख सकें कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा अच्छा डॉक्टर है, एंड मे बी डिस्कस कर सकें अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स विद डॉक्टर्स एज वेल। दैट्स व्हाई द नेम टॉक हेल्थ। ठीक है जी। तो ये सोच के हमने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इस तरीके से सोच के कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो यस, मतलब you feel like this is a big enough problem, you feel you've got a solution to it that addresses that problem, but does the market actually accept that or not? कस्टमर के लिए क्या वो प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि नहीं है? क्या जो आपका कस्टमर है उसके लिए पैसे देने के तैयार है कि नहीं है? ये चीज आपको कभी भी क्लियर नहीं होती, राइट, until and unless you actually go to the customer, right? सो हमने इसी तरह ही किया। हमने अपने जहन के साथ अपने कमरे के अंदर बैठ के एक प्रोडक्ट के स्पेक्स सोचे और प्रोडक्ट बना के जब उसको लॉन्च किया, इट वाज अ डिजास्टर। ठीक है जी। सो आपने अपना टाइम ज़ाया किया, अपनी एनर्जी ज़ाया की, अपने पैसे ज़ाया किए, not just in developing the product, the design, the development, and then the marketing campaigns, and then the launch and everything. आपने सब कुछ किया और at the end you get to know ये नहीं चलेगा। ठीक है। 3 months down the road, you know कि यार people are not using it, ये चलने वाला, right? So फिर क्या? What else can we do? जो प्रोसेस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलप। और 99% of the companies that I know, they do product development. उनको एक आइडिया है कि यार ये प्रॉब्लम है किसी बंदे का, उनको आइडिया है कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है, और वो फीचर्स पे फीचर्स बिल्ड किए जाते। ठीक है। और वो फीचर्स बिल्ड करने के बाद वो उसको मार्केट में लेके आते हैं, और मार्केट में आने के बाद उनको पता चलता है कि whether this is going to be a success or not. Customer development is very different. Customer development में you focus on the customer from day one. पहले दिन आप कस्टमर के साथ जाके बैठते हैं। सो कस्टमर डेवलपमेंट है क्या? स्टीव ब्लैंक नाम के एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी इन 1990s, जिसका नाम था कस्टमर डेवलपमेंट। और एक कस्टमर डेवलपमेंट इज अ कंप्लीट प्रोसेस टू विच यू बिल्ड योरसेल्फ। ठीक है जी। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टॉक टू द कस्टमर। ठीक है जी। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम एंड नॉट द सॉल्यूशन। हमारे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि वी फॉल इन लव विद द सॉल्यूशन। हमने अपने कमरे में बैठ के एक सोल्यूशन डिजाइन किया है, एंड वी ट्राई टू डिफेंड इट वेयरएवर वी गो, एंड दैट्स द रॉन्ग अप्रोच ऑफ इट। वी नीड टू गो टू द कस्टमर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, क्या उसका कोई डिफरेंट वेरिएंट ज़्यादा अच्छा है, और फिर वहां से हमें अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फीचर्स को, जो भी आपका एमवीपी का फीचर्स हमने डिफाइन करने हैं, उनको स्टार्ट करें। सो
कॉमन रीजंस ऑफ स्टार्टअप का फेलियर, अगर ये दिस वाज रिसर्च कंडक्टेड अबाउट 80 प्लस फेल्ड स्टार्टअप्स की रिसर्च कंडक्ट की गई इन द वैली, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा रीजन निकला उनके फेलियर का, दैट वाज प्रोडक्ट मार्केट फिट। कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था वो मार्केट के लिए फिट ही नहीं था, मार्केट के लोग उसको यूज ही नहीं करना चाहते थे, दैट जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया था दैट वाज नॉट अ बिग इनफ प्रॉब्लम फॉर द मार्केट, राइट। 34% एंड एवरीथिंग एल्स जो जिस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, टेक प्रोडक्ट ये वो, दैट्स अ मीगर। So what we try to achieve as founders, either stepping into the market or who are already in the market, we need to focus on achieving product market fit. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आप करते हैं कस्टमर डिस्कवरी। यू ट्राई टू स्टडी द कस्टमर, कस्टमर क्या करता है, कहाँ पे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है, what are the biggest pain points, how you can address them. You need to spend time with the customer as much as possible, whoever your market is. The next step is customer validation। ठीक है, आप कुछ उसके लिए फिर बना के जाते हो उसके पेन पॉइंट के लिए, ठीक है, और उससे उसी सी वैलिडेशन लेते हो कि यस दिस इज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। Okay, so you in the phase number 2, you do customer validation। आप प्रोडक्ट का MVP बनाते हो, MVP बना के उसको वैलिडेट करते हो। कस्टमर क्रिएशन, you need to make sure that whatever you created satisfies their need। And the last one is कंपनी बिल्डिंग, जहाँ पे आप स्केल करने की बात करते हैं। इन चारों स्टेप्स में when you working on the customer development or not the product development, customer is at the heart of the about the customer creation. Maybe you're talking to the customer, making sure that what you build in is what he wants, taking feedback and अभी भी उसके pain point के ऊपर आप
साइलेंट। So you state the initial problem जो आपके back of the mind है, जिस प्रॉब्लम को आप लेके चले हो सॉल्व करने के लिए, आप उससे कंफर्म करो कि क्या वो भी ये प्रॉब्लम फेस करता है कि नहीं। श्योर जी जी श्योर सॉरी। सो आप अपना प्रॉब्लम स्टेट करो, वैलिडेट करवाओ कि कस्टमर का भी ये प्रॉब्लम है, राइट। व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट, व्हाई इज इट सो हार्ड, आपके पास करंट इस चीज का क्या सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के लिए आप क्या पे कर रहे हो, राइट। इन इस तरीके से अपना इंटरव्यू कंडक्ट करें। व्हाट इट डज इज इट ब्रॉडन्स द स्पेक्ट्रम, यू गेट टू नो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में हार्डेस्ट पेन पॉइंट क्या है, क्या वो पैसा देने को तैयार भी है कि नहीं है, राइट। rather than कि आप simply अपना product, when you take your product to a customer, now he is in a box, right, he'll either say no or he'll say yes, and 9 times out of 10 एक बात याद रखिएगा हमेशा, people don't put their money where their mouth is। वो पहले कहेंगे वाह क्या बात, जब कहेंगे ले लो तो फिर लेंगे नहीं, ठीक है। And that's the story of मतलब all over the world, not just Pakistan. So it's very important that you try to understand them. You try to understand the problem. You try to understand the heavy game. And this is the right time to invest in this exploration rather than कि जब आप बना चुके हो सब कुछ आप उसको करते हो. So that's a lot of time, energy, and money lost. This is a very good link that I found for you guys. List of customer development questions. ये एक जबरदस्त किस्म का एक वो है यार, साइड शेयर हो जाएंगे ना काम इनके साथ बैक। तो आप इस लिंक के ऊपर चले जाओ और इस लिंक के ऊपर ना हर तरह के प्रोडक्ट के लिए, हर तरह की सिचुएशन के लिए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए। तो दिस विल हेल्प यू आउट इन योर कस्टमर इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। फिर है आपके पास वैलिडेशन। आप गए, आपने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, आपके पास एक पहले से एक डेफिनेशन थी आपके प्रोडक्ट की, आपकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसके अगेंस्ट एमबीपी के फीचर्स थे, आपने इंटरव्यूज कंडक्ट किए एज मैनी एज पॉसिबल, और उनकी बेसिस के ऊपर आपने अपनी डेफिनेशन को ट्वीट किया और डिफाइन किया कि अच्छा मैं ये वाला एमबीपी के साथ मार्केट के अंदर जाऊंगा क्योंकि मेरे इंटरव्यूज ने ये वैलिडेट किया कि दिस इज अ प्रॉब्लम एंड आई गॉट अ गुड इनफ सॉल्यूशन फॉर दैट। के अराउंड आप अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बेसिक फंक्शन एंड द पर्पस इज कि ये मैं उनके इंटरव्यू वाले बंदों के पास लेके जाऊं और उनसे पूछूं यार आपका मसला सॉल्व कर। एंड लास्ट पार्ट इज कि आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर, आपने एमपीपी बनाया और उसको आपने पोजीशन किया अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू सो दैट यू कैन पार्ट। नेक्स्ट कम्स कस्टमर क्रिएशन। कस्टमर क्रिएशन के अंदर आपका एमवीपी बन चुका है। अब आप देख रहे हो कि यार मेरे एमवीपी यूज करते हुए किस बंदे को क्या प्रॉब्लम आती है, कौन सा फंक्शनैलिटी सही चलती है, कौन सी नहीं सही चलती, कितने % ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज सेट एड्रेस हो। बहुत से केसेस में आप 1-to-1 इंटरव्यू कर सकते हो, आप 1-to-1 स्पेशली जिन लोगों ने आपकी इनिशियल इंटरव्यूज में हेल्प की थी, आप उनके साथ 1-to-1 भी प्रोडक्ट का डेमो करा सकते हो, उनके पास इंस्टॉल करके छोड़ सकते हो कि आप ऑनलाइन सर्वेस कंडक्ट कर सकते हो, आप फोकस ग्रुप्स बना सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इफ योर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज वर्किंग। These days, these days, what you can also do is, या ये बल्कि हाईली रिकमेंडेड है कि आप करें, आपके पास अपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म, एनालिटिक्स, केपीआईज वेल डिफाइंड चाहिए पहले दिन से। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करो, आपको पता हो कि मेरा जो यूज़र है वो प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज कर रहा है। डिफाइन करें कि मेरे पास इतने % ऐड टू कार्ट होना चाहिए, मेरे पास इतने % चेकआउट रेट होना चाहिए, मेरे पास इतने % बाउंस रेट होना चाहिए। जो भी है आपके, आप अपने सारे के सारे मेट्रिसेस ऑन द एमवीपी आप डिफाइन करें और कस्टमर बिहेवियर को कम ऑल द टाइम ऑब्जर्व करें। Customer development, as I said, it's not just talking to the customer, it's observing them, how they're using it, what's working, what's not working, and then pivoting and taking a direction as you go along. These are some of the tools which can help you understand the customer behaviors. मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं. I think
किसी भी MVP के लिए और किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर वो अपने कस्टमर का बिहेवियर उस प्रोडक्ट के लिहाज से समझना चाहता है, these can help a lot. And the last part is company building. So होता ऐसे है कि जब आप एक प्रोडक्ट बना लेते हो और प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर लेते हो, इस पूरा की पूरी जर्नी के अंदर आपको आइडेंटिफाई होती हैं बहुत सी और चीज़ें। यार अच्छा यहाँ से भी रेवेन्यू बनाया जा सकता है, अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको टेस्ट किया जा सकता है। एंड देन once you've achieved the product market fit, what's very important now is that you scale in a manner that the customers actually want you to scale. As I said, when you're a startup, there's one problem and there's one solution. You cannot say, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ. One problem, one solution. Focus on that, get that right. And once you've got that right, that's the point that you need to scale. Not just scale in terms of customer, but scale in terms of the feature set as well. And there too, the customers are really very important. At this point, आपके पास hopefully customer base इतना बड़ा होगा कि आप different personas बना सकोगे customers के लिए और उनके लिए आप different variations अपने product की pitch कर सकोगे. And at the end, I'd just like to say one thing. The startups who focus on the customers really feel like the customers are the king, are the ones who are successful. Customer is the king. Thank you so much. हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सरफराज, वेरी इंसाइटफुल सेशन। अभी हम व्हाट वी गोइंग टू डू, हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं उसमें। यहाँ पे लग रहा है सबको नींद नींद किसी को नहीं आ रही, अच्छा है सेशन था। सो वर्चुअलों का पता नहीं होता ना, वर्चुअल जो है ना हमारे, वो दे अटेंड और उसमें बड़े अच्छे लोग भी होते हैं, वो प्रॉपर सुनते हैं, दरमियान में इंगेज होते हैं, लेकिन अगर लगा के सो के हूँ हम तो क्या किया जाए। यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आई कैन सी ईच वन ऑन, यस। अब सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो एग्जैक्टली, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम इसको वी मेक इट इंटरेक्टिव। सो सर आप इधर ही आ जाएं, सिट ओवर हियर, और यहाँ पे बैठ के जरा गप लगाते हैं। आ जाएं प्लीज सरफराज भाई, आप भी आ जाएं। हम जरा इसको जरा थोड़ा विल मेक इट इंटरेक्टिव primarily with these guys because ये session it's very important session to say the least. Why? Because जो आपने बात की अभी मैं इनफैक्ट मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ही है, इनफैक्ट आप भी इसको जरा हम आपको भी जरा इसमें वो करते हैं कि if your feedback on, and then we'll take questions from all of you guys. अच्छा, virtual startups, all those who are listening, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल ठीक हो गया, चलो सही है, मोमेंट जाग रहा है, बाकी अच्छा हो गया। So, आप लोगों के any questions that you have, if you want to write in the chat, you can write in the chat. Otherwise, इसमें एक hand raise का feature भी है, so you can use that feature as well. And then we're going to take your questions as well, ताकि हम इसको आपके साथ भी ज़रा interactive कर सकें. For those who are present here, तो अभी आपसे हम गप लगाते हैं, क्योंकि primarily this session is for you. Yes, you want to ask the first question? ओके प्लीज चलें, ओके आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। Sarfraz Arshad, हमारी company is a motorcycle company. We are hoping to be the first company to make heavy bikes in Pakistan, assemble heavy bikes, and hopefully get into designing them here. आपका माइक नहीं चल रहा है, I guess. Hello. So Sarfraz, our first thing that you worried us a little bit that we might not be a tech company because we have a product, a physical product that we're selling. So we might not be a tech company. But the issue that we are having at the moment is that we've set up a factory to make heavy bikes in Pakistan, and which bikes we should bring in, understanding our customer. I mean, Navera Waheed. it's going to be middle class, upper middle class men. So the first question is, like in interviews, how many people would you think in our case, for a product, a physical product, how many people should we be interviewing? How many customers should we, and you would think that you're 500, 1,000, 100, that you would get a better idea of our customer base. That's something that I've, because I have run
you call it, online Surveys. online surveys. I have my own website that sort of surveys people who come, and I have Google Analytics on it. So it still doesn't give me confidence that, you know, because the investment of bringing the bikes is huge. So getting the wrong one will be too expensive for us. Yeah, absolutely. I mean, I think we need to be a little creative over here. So there's no one size fits all or one answer for your question कि आप इतने इंटरव्यूज कर लो and you're good to go. I think अगर ये मैं कहूँगा तो आप लोग ही मुझे बेवकूफ कहोगे. एंड इट्स ओके, मतलब हर बिजनेस का टेक प्रोडक्ट होना तो जरूरी नहीं होता ना. सही है, इट्स ऑल गुड. आई थिंक as far as the interviews go, आप देखो, the way I would approach this, so मैं आपकी जगह पे हूँगा तो मैं अपने कस्टमर का आइडियल पर्सोना बनाऊंगा सबसे पहले. यार maybe you can do 2 or 3, right? But ideal personas बना लें सबसे पहले कि यार ये लोग मेरा बाइक खरीदेंगे, right? And then try to find them online, try to find them in person. जिस तरीके से भी आपका B2C product है, right? It's not a B2B product. So do as many as possible. But in your case, what I would suggest is कि आप pre-orders लोगे, आप सामान मंगाओगे नहीं, आप बुकिंग्स लोगे, आप ऑर्डर्स लोगे, आप एड्स रन करोगे, अपनी कैंपेन रन करोगे और उसके एड्स और उसके ऊपर ऑर्डर्स लोगे. जिस तरह गाड़ियों की बुकिंग होती है, वेरी सिंपल. आप आज बुक करते हो, 20 दिन 4 महीने बाद अब तो आ रही है. एंड दैट्स योर मॉड. एंड इन डिसाइडिंग अपॉन कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ये बुकिंग्स लेनी है, आई थिंक build that persona and reach out to as many as possible. I'd love it if you can do 500 interviews at least. I as an investor will value that कि अच्छा 500 interviews करने के बाद, और 500 interviews of the real persona that you're targeting. आप random interviews कर रहे हो तो उसका तो इतना फायदा नहीं है, लेकिन आपने अगर 500 से 1000 interviews of the right persona कर लिए हैं, then it means that you've pinned down the needs as far as I'm concerned. And this is very subjective, right? It can be 500 to 1000 for me. It can be like 10,000 for Kamran. Or maybe if Kamran is very lenient, he might be happy with 50. But this is subjective, and data is like that. So you can play around a lot with your data. मेरा ख्याल है तुम्हारी अपनी comfort as a founder is I think that's the real thing. at the moment where we need to decide which bikes. Yeah. And I think I think आप जितने मर्जी interviews कर लो, as I said, people don't put their money where their mouth is, and in your case, you don't need to build anything, you don't need to import anything. All you need is a few posters and a few online campaigns to gauge किसी ने खरीदना है कि नहीं खरीदना. अगर कोई बुकिंग करता है इसका मतलब इसने खरीदना है, जिसने नहीं करता, या maybe bring in one model जिस तरह गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते हैं जो उन्होंने शोरूम में रखा हुआ होता है, and based off of that they're taking orders. That's about it. ठीक है. Thank you so much. So I'll just try to add something here, because it's a very niche market which you are targeting, right? So उसमें जो market segmentation और like 500 or 1000 questions, like definitely कि आपको जितने ज़्यादा लोगों से आप करेंगे, but जो उन्होंने बात की कि एक जो क्या कहते हैं मार्केट सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर क्या कहते हैं प्री ऑर्डरिंग वाला जो है, अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम. ठीक है, बिकॉज whatever we have seen in the world, manufacturing in Pakistan is getting very high. उसकी कॉस्ट बहुत आई है क्योंकि हमने फिर एट द एंड ऑफ द डे पार्ट्स इंपोर्ट करने होते हैं, क्योंकि हम सब कुछ तो एंड टू एंड नहीं बना रहे होते हैं. तो आपको पूरा एंड टू एंड, नॉट ओनली कि जी मैं आज तो इस बिजनेस में जा रहा हूँ, ये मेरा शौक है, लेकिन क्या अगले साल जो इसके पार्ट्स हैं मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्या उसके ऊपर कोई बैन तो नहीं होगा, उसके ऊपर क्या ड्यूटीज होंगी, व्हाट वुड बी द फैक्टर्स. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. बट कस्टमर डेवलपमेंट में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मेरी किस मार्केट सेगमेंट की प्रोडक्ट है और मुझे फिजिबल क्या पड़ेगी, इंपोर्ट करके या मैं लोकल डेवलपमेंट में जाऊंगा. बिकॉज आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट की थी और फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को फुल स्टॉप लगा दिया, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस एड्रेस नहीं हो पा रहे थे ओवर द लॉन्ग पीरियड ड्यू टू अ लॉट ऑफ ड्यूटीज इंपोर्ट और वो सेगमेंट. क्योंकि इस वाले में जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तो बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं.
So yes, but market segmentation is the first part from that perspective. Thank you very much. Thank you. Hello. So can you give me an example of the user journey? या user के perspective से वो कैसे होगा for a SaaS company or a software company? For a software company, Yeah. एक कंपनी जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग है. Yes. ठीक है. So if I am offering a software solution, let's take example of ERP or Salesforce or Oracle ERP or SAP. So we need to identify a customer. तो जिस तरह क्योंकि mostly B2B है, Yes. right? So B2B में customer की needs identification होती है और उसमें mostly because ये वाला जो part है, this is mostly from the physical presence or meetings. जिस तरह अभी बहुत दफा ये होता है कि people send an email or the queries करते हैं, but this is the first level. But उसके बाद कुछ questions, qualifying questions होते हैं कि जिसकी Yeah. बेस के ऊपर कि क्या मैं इसके ऊपर वैलिडेट करता भी हूँ कि नहीं इस प्रोडक्ट के लिए. सपोज यू आर अ सैप एंड आई एम आस्किंग यू क्वेरी. सो मैं क्वालिफाई करना क्या करता हूँ इसके लिए. हो सकता है क्वालिफाई फॉर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, आई डोंट हैव दैट बजट फॉर यू. ठीक है. तो वो जो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं कि बजट है, इज ही द राइट पर्सन, उसको नीड है, उसके पास मुझे कौन कौन से, अगर हम ये बात करें तो कौन कौन से मेरे मॉड्यूल्स फिट होंगे. जितने भी सॉफ्टवेयर सैस है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल बेस होते हैं, राइट. सो क्वालिफाइंग में क्वालिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं जिसके बाद हम उसे प्रोस्पेक्टिंग से फिर क्वालिफाइंग में लेके जाते हैं. सो प्रोस्पेक्ट तो हर बंदा एज अ प्रोस्पेक्ट. इसमें मुझे नजर आता है कि अच्छा यार ये 50 लोगों की कंपनी है, ये 100 की है, 200 की कंपनी है, वो सारी मेरी प्रोस्पेक्ट है. बट क्या वो हो सकता है 50 बंदों की कंपनी के पास वो बजट है टू बाय माय प्रोडक्ट, बट 200 की बंदों की कंपनी के पास ना हो. So while we go for qualifying, so उसमें Yeah, qualifying got it. questions वो होते हैं. But basically मेरा reason ये था कि we have आपने जो अपना पूरा journey दिखाई थी, we have automated that entire process. As you mentioned yourself, qualifying questions काफ़ी important होते हैं. So I'm going to give you an overview हमारी जो sales funnel है वो कैसे work करती है. Basically somebody comes to our website, we have an AI agent there जो उनको engage करते हैं natural language. They ask them a very specific set of qualifying questions as you said, and if they qualify for that, we have an algo that qualifies them and stores them in another funnel. Here we have another agent that sends them a warm email based on that conversation, and then we keep engaging them. So, do you think AI will be able to do a good enough job as compared to a human representative for that funnel? AI will be able to close definitely from qualifying to prospecting. Yeah. Prospecting तक yes, because अगर हम इससे पहले चले जाएं यानी बिफोर AI, तो हम लोग जो क्या कहते हैं ईमेल्स जनरेशन और इसको कोल्ड कॉलिंग और ये सारा प्रोसेस तो हम उसको रन किया करते थे. कोल्ड कॉलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट वी गोइंग टू द AI और टू दीज एजेंट्स, ऑटोमेटेड एजेंट्स. तो वो वाला प्रोसेस डेफिनेटली, क्योंकि जो हम पहले कर रहे थे वो वाला ऑटोमेट हो जाएगा, क्वालिफिकेशन तक हो जाएगा. जब उसके बाद अगला जो है उसमें फिर यू नीड ह्यूमन इंटरेक्शंस. वो चाहे आप रिमोटली कर रहे हो चाहे ऑन फिजिकल कर रहे हो, दैट वुड बी रिक्वायरिंग. Because basically हमारा we are a B2B company, right? So we want to close the client on a call. So आपके जो 9 steps हैं out of 10 they are automated by AI, but the last step is अच्छा अगेन यहाँ पे फिर वेरी करता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. yeah. देयर आर प्रोडक्ट्स जिसमें कि आपकी मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन है, Exactly. एंड देन देयर आर प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत ही एक्सटेंसिव ह्यूमन इंटरेक्शन है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इट कैन कवर. Okay, thank you. अच्छा जी, क्वेश्चंस आ रहे हैं. मैं जरा एक क्वेश्चन मेरा, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन ऑन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अपनी कस्टमाइज जर्नी बताएं कस्टमर डेवलपमेंट की. जब आपने स्टोरी स्टार्ट की, बड़ी मज़े की टॉक हेल्थ की, हमें पता है सारी स्टोरी, लेकिन हम शेयर करते हैं स्पेशली विद आवर दिस कवर कोहोर्ट कि जब आपने एक एजम्पशन की बेस पे आपने एक प्रोडक्ट बना ली, जो कि हम बहुत बड़ा डिलेमा है हमारे स्टार्टअप्स का. प्राइमरीली जितने भी टेक फाउंडर्स हैं ना, उनको मैं कहता हूँ कि हम सोल्यूशन बेस्ड हैं. हम प्रॉब्लम सोचते ही नहीं कि प्रॉब्लम है, हम पहले कहते हैं सोल्यूशन पहले बनाएंगे फिर ढूंढेंगे प्रॉब्लम इसके लिए. उल्टा अप्रोच रखते हैं. तो ये आपकी भी यही अप्रोच रही, आपने पहले सोल्यूशन बनाया फिर प्रॉब्लम ढूंढने निकले मार्केट में, तो पता चला प्रॉब्लम कोई और है
solution कुछ और है. How was that journey, your personalized journey? ताकि because so that these guys can relate to your journey and they don't make those mistakes that you made initially. Absolutely, I guess मतलब we were naive, हमें भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी. So I come from a technical background. I come from a completely technical background. आप में से भी जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होंगे ना, उनके लिए जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना, दैट इज द कंफर्ट जोन, और वो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है. तो हम क्या करते हैं, हम पूरा दिन डेवलपमेंट करते हैं और रात को ना पूरी रात मतलब वी आर एक्साइटेड अबाउट द न्यू फीचर्स दैट वी आर गोना ऐड इनटू इट, और ये नहीं सोचते हैं कि ये फीचर्स किसी ने यूज भी करने हैं कि नहीं करने. एंड सिमिलरली मतलब जिस तरह कामरान ने कहा, वी स्टार्टेड ऑफ टॉक हेल्थ के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म था, एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद अ सिंपल डॉक्टर लिस्टिंग प्लेटफॉर्म कि यार आप जाओगे आपको डॉक्टर्स की लिस्ट नजर आ जाएगी, you'd be able to review them. So yeah, naturally आपको reviews भी उसके नजर आ जाएंगे उस डॉक्टर के, and you'll be able to like ask questions. तो वो उसमें आइडिया ये था कि आप क्वेश्चन पूछोगे, डॉक्टर अपनी मार्केटिंग के लिए उसके ऊपर रिप्लाई करेगा, और इससे डॉक्टर की भी सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होगी, एंड he'd be able to generate some good business out of it. इस आइडिया और हाइपोथेसिस को हमने कुछ 3-4 लोगों के साथ वैलिडेट करवाया, कुछ जो जानने वाले डॉक्टर्स वगैरह थे, और कुछ लोग जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती डॉक्टर ढूंढने की, उनसे हमने वैलिडेट करवाया. हम बनाने के ऊपर जो है वो तुल गए, और आई थिंक इट टुक अस अबाउट 6 months to get that into production. We signed up a lot of doctors. डॉक्टर साइन अप जल्दी हो जाते थे. तकरीबन इस्लामाबाद रावलपिंडी में हमने लॉन्च किया था विद 1,000+ डॉक्टर्स, a few clinics and a few hospitals. और आफ्टर 3 months हमें पता चल गया था कि ये चलने वाला नहीं है. वी हैड आफ्टर अबाउट 3 months कोई 20 और मे बी अपॉइंटमेंट्स कमिंग आउट ऑफ आवर प्लेटफॉर्म. एक तरफ से डॉक्टर अफेंड हो रहे होते थे कि यार आपकी तरफ से तो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं आती, आप हमारा टाइम ज़ाया करते हो. दूसरी तरफ से हम पेशेंट्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट भी करते थे, मार्केटिंग भी करते थे, अच्छी खासी एफर्ट करते थे, लेकिन कुछ बनने में नहीं आ रहा था. लेकिन द गुड पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस वाज कि हमने जो 1,000 डॉक्टर साइन अप किए थे ना, वो हम इंडिविजुअली जाके डॉक्टर से मिलते थे. अगर मुझे पहले मैं ये काम करता ना, तो शायद मैं ये प्रोडक्ट बनाता ही ना. लेकिन जब हम अब एक डॉक्टर से मिलना, एक अच्छा डॉक्टर, जाहिर है आपके प्लेटफॉर्म पे अच्छे डॉक्टर होंगे तो लोग आपके पास आएंगे. अगर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे ही थके हुए डॉक्टर हैं तो कोई आपके पास नहीं आने वाला. एक अच्छे डॉक्टर से मिलना इतना बड़ा मसला है कि जिसकी कोई हद नहीं. वो डॉक्टर से मैं कुछ थोड़ा बहुत स्टोरी आपको सुनाता हूँ. डॉक्टर्स ने अपना SOP रखा होता है कि हमने एक पेशेंट को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देने. ठीक है जी. एंड दे रन OPDs ऑफ अबाउट मोर देन 100 पेशेंट्स इन द इवनिंग. एक रात में वो 100 से ज़्यादा पेशेंट्स देखते हैं, और हर पेशेंट के लिए सेट किया होता है 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं देने, नेक्स्ट पेशेंट आना चाहिए. तो इसमें वो जब एक पेशेंट से चार्ज कर रहा है 2,000 रुपया एक अपॉइंटमेंट का, वो आपको कहाँ टाइम देगा, वो आपको टाइम ही नहीं देगा. और जब मैं जाता था मीटिंग के लिए, जाके बैठा रहता था, डॉक्टर साहब फ्री नहीं होते थे. वो फिर पता चला हमें कि रात को 12 बजे की स्लॉट इन्होंने खाली की हुई है मेडिकल रेप्स के लिए. उसमें मेडिकल रेप्स आके अपनी प्रोडक्ट्स उनको दवाइयाँ उनको पिच करते हैं, जिसमें से कुछ दवाइयाँ वो लोग कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, हम ये लिखना शुरू कर देंगे दवाइयाँ. तो अब उनके साथ हम जाते होते थे डॉक्टर से मिलने के लिए, और उनको जाके जो है अपना प्रोडक्ट पिच करते थे कि जी आप यहाँ पे आप लिस्ट हो जाएं और उसका ये फायदा होगा और ये वो फलाना ढिमाका. सो बट दैट जर्नी जहाँ पे हमने 3 से 6 महीने लगाए इन डॉक्टर्स को, क्लिनिक्स को, हॉस्पिटल्स को साइन अप करने के अंदर, दे हमारी उनसे थोड़ी सी रिलेशनशिप बन गई. हमें उनकी नीड्स और वांट्स का आइडिया हो गया, और वो खुद ही हमें कहना शुरू हो गए, यार ये आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम बड़ा अच्छा है. अपॉइंटमेंट तो नहीं आती इसके ऊपर, लेकिन वो जो SMS जाता है ना जब मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ किसी को, यार उसका बड़ा मजा आता है. यार इसके साथ साथ मुझे ना एक वो पर्ची भी निकल आया करे ना मेरी वो उसकी बिल की, तो ये बड़ा जबरदस्त हो जाएगा. हमने वो बना दी. फिर एक दिन एक और डॉक्टर साहब आए, वो हमें कहते हैं यार वो ना मैं चाहता हूँ कि मुझे टाइप ना करना पड़े, वो मुझे हाथ से ना लिखना पड़े, टाइप हुई हुई निकलती है प्रिस्क्रिप्शन. मैं US से आया हूँ, बड़ी अच्छी लगती है. आई एम टॉकिंग अबाउट 2015. तो हमने देखा कि यार दिस प्रोडक्ट इज स्लोली इवॉल्विंग इनटू अ क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम, एंड वी फॉर्मली स्टार्टेड सेलिंग इट एज अ क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम.
और इसी तरीके से क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम जब हम सेल कर रहे थे, एक हॉस्पिटल ने हमारा क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम देखा और उसने कहा यार आपका इतना अच्छा क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम है, व्हाई डोंट यू बिल्ड अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अस, एंड दैट इज हाउ वी बिल्ड आवर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। और यही दो प्रोडक्ट्स थे हमारे जो कि इवेंचुअली कॉग्निटिव हेल्थ इंटरनेशनल ने हमसे बाय किए थे। सो द इनिशियल प्रोडक्ट दैट वी स्टार्टेड ऑफ विद वाज डम्प्ड। ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन थी ये कि हम कस्टमर से बात ही नहीं कर रहे थे, हमारी रिलेशनशिप भी नहीं थी कस्टमर्स के साथ। वही जब हमने काम किया, जब रियलाइज की वैल्यू ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के साथ एम्पैथाइज किया, कस्टमर से बात की, वो खुद बताते हैं आपको अपना प्रॉब्लम, आपको सिर्फ उनके साथ बात करने की जरूरत है, उनके साथ एक थोड़ी सी रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत है। ही शुड बी सो कंफर्टेबल टेलिंग यू कि यार मुझे ये चाहिए, ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब हम कहाँ उनकी अपॉइंटमेंट बेच रहे हैं, वो मुझे कह रहा है यार तुम मुझे जो है ये इनवॉइस निकाल दिया करो, फिर वो खुद ही जब इनवॉइस से बात आगे चलती है तो अच्छा यार मैं स्टैट्स भी देखना चाहता हूँ अपने, वो बात से बात नहीं करती है। एंड दैट इज द रियल स्टोरी ऑफ हाउ टॉक हेल्थ एक्चुअली एग्जिटेड। ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जहाँ जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने कस्टमर से बात। थैंक यू सो मच। अच्छा, सेम, ये पता नहीं चेयर में मसला क्या हो रहा है मैं समझ। अच्छा, ओके, सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू। आपने देखें, यू हैव बीन सेल्स, आप करते हैं B2B सेल्स का, आपका एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपर्टीज एंड ऑल दैट। कस्टमर डिस्कवरी स्पेसिफिक अपना बताएं, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस to which like our founders can relate। मैं दो and तीन it's- एक्सपीरियंसेस जो है ना वो शेयर करूंगा। एक तो खैर फ्रॉम दिस, एक चीज जो कि मार्केट सेगमेंटेशन है, कस्टमर मार्केट सेगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह अगर हम जो है सरफराज की अगर स्टोरी में देखें तो जो मार्केट दे वर थिंकिंग विल गिव द रेवेन्यू, दे डिडंट जनरेटेड द रेवेन्यू। ठीक है, जिनको एक जो है वो जो एक सोर्स था, दे जनरेटेड द होल न्यू सेगमेंटेशन। अच्छा, दूसरा जो इससे एक ये कि वेन एवर यू थिंक MVP आप चेक करवाते हैं, चीज़ें चलती हैं, बट लॉन्च योर वर्जन 1। डोंट वेट कि जी मेरी प्रोडक्ट अच्छी होगी, बेहतर होगी तो चलेगी। हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, इस तरह B2B, एंड एट दैट टाइम, ये खैर मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, बैक इन 2005-6 जब नया नया पाम लॉन्च हुआ था, शायद पाम किसी को आइडिया भी ना हो, पाम पायलट नई डिवाइसेस और मोबाइल नहीं होते थे। सो पाम पायलट लॉन्च हुआ तो हमने कहा यार इसका पाम वर्जन बनाते हैं फील्ड की के लिए, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स जाएंगे, और हम वी वर लाइक डूइंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज। तो हमने कहा यार ये हमारे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर यूज करते हैं, तो हमारे जो है ना सबके लिए, तो हमने प्रोजेक्ट बना दी। अब क्योंकि सब टेकीज थे, तो टेकीज के लिए था यार हमने इस प्रोडक्ट को बेस्ट करना है, बस इसमें ये फीचर भी होना चाहिए, ये फीचर भी होना चाहिए, ये फीचर भी होना चाहिए। एंड वी लॉस्ट द टाइम कि एक और कंपनी ने हमारी प्रोडक्ट का 20%, लाइक हमारी जितनी प्रोडक्ट थी उसका 20% लॉन्च कर दी। एंड दोज टाइम्स वर लाइक वो, एंड अब तो ओरेकल ने परचेज कर लिया शायद प्रेमावेरा, अगर लोगों ने नाम सुना हुआ तो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी प्रेमावेरा। सो प्रेमावेरा एक्चुअली एक्वायर्ड दैट प्रोडक्ट। ठीक है। सो इट्स के अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कस्टमर आइडेंटिफाई हो गया है, तो जब आप ये समझते हैं कि हाँ यार ये बेसिक, इस तरह MVP की बात कर रहे हैं कि ठीक है आपका स्टार्ट, देन स्टार्ट लॉन्च। अगर विंडोज भी या इवन आईफोन भी, आईफोन 16 का इंतजार करता है कि जब तक वो होगा तो मैं लॉन्च करूंगा, तो आज तक आईफोन भी लॉन्च ना हुआ होता। ठीक है। सो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का तो ये वाला है कि यार यू मस्ट लॉन्च इट एंड डेवलप इट एंड लॉन्च इट, ये तो जरूरी है। ठीक है। अच्छा, कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर डेवलपमेंट में, बिकॉज वी आर इन B2B, तो B2B में अब तो काफी कम जूतियां घिसानी पड़ती हैं, पहले बहुत ज्यादा जूतियां घिसानी पड़ती। सो आई रिमेंबर दोस्त कस्टमर जहाँ पे 6-6 महीनों में तो हमें खाली मुश्किल से जाके एंट्री मिलती थी कि अच्छा ठीक है हम एंटर जो है हो सकते हैं। जिस तरह उनका कि जी जो है डॉक्टर्स टाइम नहीं देते थे, तो देन लाइक फ्रॉम दैट टाइम गेटिंग इनटू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक नादरा है, अगर हम बात करें हमारा GHQ है, या जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, टू गेट इन एंड देन गोइंग, सो दोज आर ऑल चैलेंजेस। बट देन कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर के साथ आपने जाना है, उसकी पेन पॉइंट समझने हैं, उसका पेन पॉइंट, क्योंकि जो बड़े B2B कस्टमर्स होते हैं ना उनके, बिकॉज दे आर बिग ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस।
जिनमें से 4 आप हल कर सकते हैं, 4 नहीं कर सकते, तो आपका कस्टमर डेवलप होना शुरू होता है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अगर वो देखें कि हमारे सारे प्रोसेसेस है, तो हम उस सारे प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। एक वक्त में एक कस्टमर जो है वो हमें कस्टमर होता है, एक में खाली क्वालिफाइंग प्रोसेस पे चल रहा होता है। ठीक है, एक टाइम पे वो उसमें क्या कहते हैं रिकरिंग में आ चुका होता है। सो इट्स अ प्रोसेस वाइज। लेकिन क्योंकि आप लोग तो, क्योंकि सरफराज ने बहुत अच्छी जो प्रेजेंटेशन थी एंड ही डिड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पॉइंट, बिकॉज आप लोग तो बिल्कुल जर्नी के स्टार्ट पे, वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ वेरी डिटेल्ड वे, कि जो आप लोग करने जा रहे हैं कि वही है कि हाँ, जब फ्रॉम टेक बंदा होता है तो उसके लिए तो प्रोडक्ट उसकी जान होती है, और वो उसको हर तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, और अगर कोई कहता भी है तो हम खुद इस फेज से भी गुजर चुके हैं, और हमारे अपने बहुत सारे दोस्त भी इस फेज से गुजर चुके हैं। देन दे लाइक वो होता है कि हाथी, बहुत सारे लोग हाथी पालते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक्चुअल एग्जांपल्स लाइव देखी हुई है कि जैसे ठीक है, पाल रहे हैं, ये प्रोडक्ट चला रहे हैं, रेवेन्यू नहीं दे रही, कुछ नहीं कर रही, बट हम उसको सर्वाइव करवा रहे हैं। तो जो है ये कि आपका कस्टमर डेवलपमेंट के हमने जो हमारी एक्सपीरियंसेस और वो हैं कि इट्स अ जर्नी। जिस तरह कहा कि जी उनका जर्नी था, तो ये जर्नी होता है। आप यू कैन नॉट डू इट इन लाइक दिस। Thank you very much. Acha guys, so our third mentor is with us online. So she was supposed to be in person. Navera, welcome. Hi everyone. Hi, how are you? So Navera, Good. she's the founder and CEO of Orbit Ed. She was supposed to be here in person, लेकिन वो उनका फिर वो थोड़ा सा she got occupied, and so she decided to come online and talk to us about today's topic. So over to you. आज का हमारा topic customer development. हमारे already we have both speakers had their session. हमारा hot seat भी हो गई. So now we are having a candid discussion. हम आपको भी इस discussion में include करते हैं. But before we Thank do you. that, over to you. Thank you so much, Kamran. So let me start with a brief introduction. I'm Navera Waheed. I'm one of the co-founders and CEO at Orbited. What we are doing is in deep tech. We have AI agents, a lot of AI agents on training, on sales, on hiring, recruitment, and it goes on. And then we have natural language query enabled questions. Our customer base currently in Pakistan, that's PepsiCo, Nestle, British American Tobacco, kind of like star-studied customer base. So this particular topic which Kamran told me, it was very important. I felt that I can be of value to you guys, considering that you guys are in the start of your journey, and customer acquisition is a big part of businesses. Actually, it's the only part of running a successful business. So I'm here, and I would love to contribute in this candid discussion. Kamran, if you have any specific questions for me, so I can contribute into that. Yeah, फिर I should I talk think about we can definitely. So बिल्कुल ठीक है. So what we can do is if you have any particular questions from our startups, we can do that. हम इसको थोड़ा candid करना चाह रहे हैं. We want to make it as interactive as possible, so actually value मिल सके. We have one question in chat. Noman sir, एक Zishan का एक question था. If we could look into that ताकि हम उसको answer कर पाएं. So how can we establish a company culture that not only attracts top talent but also fosters their growth and aligns personal development with our business objectives over the long term? Zishan ये question कर रहे हैं. So Zishan is from Lahore. This is an excellent question, Zishan. May I know a bit about your business? What you guys are trying to do? How deep you are in the market? I think Zishan offline चले गए हैं. हाँ, so question नहीं किया, लेकिन I think he has gone offline. तो फिर we can answer it later on. अच्छा guys, over to you. आपके questions थे, हम questions दोबारा से लेते हैं. So Navera is here with us. Sarfraz अभी जो हमें दोबारा join करते हैं, and then we also have Mehmood साहब for the questions. जी. That's good. So introduce yourself, your startup name, what you do, and उसके बाद आपको question होगा. Hi, I'm Huzaifa. I'm the co-founder and CPO of Cosmosis, where we're building Fast Track, which is Pakistan's first AI-powered talent search engine. So my question is that my question was actually with Mr. Sarfraz, but he's not here. So the question is that in his presentation,
he mentioned that there's a script when you're asking users for interviews, and when you're talking to those users, तो एक script follow करते हो या एक template होती है that you ask those questions from, and you never start with a question. So my approach is a bit different. हम user interviews करते इस तरह है that we used to sneak into HR meetups, and we used to gather people and start asking them if they would use the product when we were first building it, first iteration when we were building that. So when we're doing those interviews, we have 30 seconds or maybe even less to convince that person to either understand what we're building or buy it from us, or at least let us come to their office next week or whatever, whenever, to demo it to them. And that's how we got our first set of customers, and we talked to more than 150 people like this by sneaking into meetups. So the question is that a lot of the time when we were asking or convincing those people during those meetups, we found it difficult to tell them the problem first and then the solution, because they wouldn't want to listen to the problem, or they wouldn't want to listen to the questions first. They would rather listen to the solution first, or they did not have enough time to listen to the problem and go about the whole description or go about the whole script before they decide whether they want to say yes or no. So how would you, or what would you suggest we do to convince those people to at least let us demo at their office? Okay. All right. So customers, if they know what the problem is, right? This problem solution thing, you mainly try it, or when you're talking to an investor or trying to convince someone of the problem, that's when you'll start with problem. I personally, I'd never start with the problem, because if I have to explain the problem to the customer who has to pay for it, and if I have to tell them that this is the problem, it never goes that well. So I usually start with the solution, and with that solution, a lot of use cases start to come in customers' mind, because all the problems that they know and I'm not aware of those, the solution can bring about the discussion on the problems if they find the value in your solution, if that makes any sense. Yeah, it does. I'll add to this. Can I? Yeah. Okay. So it has identified two things. One, you are able to find those customers who are the type of customer who feel your solution for them, right? So this is knowing your type of customer. So not everyone will be your customer. Not everyone will say yes, right? In our industry, we say we win some, we lose some, right? So we cannot win all, or we cannot lose all. So based on your success, you can identify the portfolio of the customers and the set of questionnaires which actually help you to guide. And then why scripting is important? Because it will keep you within those limits so that you can actually identify and then can move step by step. Right. So I have a follow-up question related to this. Can I proceed? जी आप Yeah. करें, question करें यार. Yeah. So the follow-up question is that when we were talking to these they weren't willing to buy the product, but they were willing to give their feedback on it. So when we were collecting that feedback, when we went to them with the MVP was solving the issue. उनका मसला जो recruitment का था, shortlisting का issue, वो हल कर रहा था. They loved it. They wanted to use it, but they wanted additional features on top of that. So every new person we talked to wanted some new feature on top of the existing feature, and that led to a little tangent where we were iterating those feedback again and again, improving the product. But every single time we went with an improved product, someone wanted a new feature on top of that product. So how do you mitigate that issue? जी नवेरा पहले आप करें, उसके बाद फिर. Yeah, this is actually a slippery slope, and I'll do everything to avoid it. So for my first question to you is, are they paying you for whatever features you have delivered? Some of them are, yeah. All right. So those people who have already paid you, you can ask them that what is going to be, so how much you can upsell with these features that they're asking you to build. That would be my first question.
So if you say that, all right, these features will be available from 6 months from now, and our revised pricing will be this, would you sign up for that beta version of our product, or would you sign up for that updated version of our product? You will get to know if they're actually willing to pay for those features, and then it'll make sense for you to create them. And I think if you have talked to a lot of customers and you have, most of those people are asking you to, create new features, you can see which ones are overlapping, right? Like, in 10 customers, each one has, say, asked you to create 3 more features, but one is constant. That's sort of validated that this feature is needed in the market that you're operating in. But always ask about, or have some way to determine that they are willing to pay you more if you deliver this feature. Got it. Thank you. Okay, here I will add. In our industry, it's called the floating milestone, because when we are doing the software projects, it never ends, right? That's why they have introduced 2 things. One, the versioning, and second, the modules. When you're developing a product, like a lot of time, even the big companies like Oracle or Microsoft, when we talk to them, and a lot of our customers were using, because we are selling Microsoft from last like 20 years. So whenever they say, okay, we want this feature or this feature, and then we get back to those guys, they say, okay, this is coming in our next version. This is part of this module, which you have to pay, right? So yes, so this brings in, like, that's why these 2 things were got introduced. The versioning, that the product, the model, that okay, we will be launching it, the roadmap of the product, right? Because we are there for the next coming years. So it's a version 1, version 2, version 3, version 4, and these are the modules A, B, C. These are for small companies, these are mid, these are large companies. If you want to buy these things, so these features are available in this module, so you can plug in, right? So that's why these things were introduced, because of these challenges. Okay, got it. Thank you. Okay, so we have a lot of questions. चलें पर यहाँ से पीछे start करते हैं. Who's this? Assalamu alaikum. I'm Uza Khan, and me and Osama Alam co-founded a company named EMR Chains. Am I audible? Right. Yes, थोड़ा सा mic करीब करें ताकि Navera is able to hear you. So EMR Chains is a health tech startup, and we are on vision to transform healthcare accessibility. I have a question with Sarfraz. We started back in 2020 September, right? Because me and Osama hold a degree in engineering with a very engineering mindset. We deployed Web3 blockchain in our product, making it a decentralized electronic medical record system, right? We got a grant, a research grant and stuff, because it's a good research product. But when we went into market, we talked to the customers, like we went to MH, we went to F8, there are many hospitals in F8, but we are unable to sell it in like for 6 months. Then we went to Maroof International Hospital. We talked to their CIO, Sir Salman Khalid. He told us, beta, this is business center. No business center will allow you to share data of their clients, like patients to different hospitals. So if you are here to make a business, and so you have to create a product what we need. So we pivoted our startup or product into a chatbot agent. It is also deployed on Maroof International site. We have good customer base of 6 clients with that. So my question is, the vision with we started that electronic medical record system, अब वो कभी कहीं use नहीं हो रहा. But as an engineer, we love our product, our idea. So do you think still, because abhi our chatbot, what it do? It takes you to the hospital's website or your WhatsApp number, hospital के WhatsApp number पे. You can ask, it can respond in Urdu and English कि आज मेरे हाथ में दर्द है तो मैं क्या करूँ, तो बताएगा आप ये एक्सरसाइजेस कर लें. फिर मैं उससे थोड़ी सी और कन्वर्सेशन करूँगी. It will recommend a doctor
इन हॉस्पिटल, मारूफ के हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स, ताकि बिजनेस भी मिल जाए ना मारूफ वालों को, राइट? अब तक वी हैव लाइक आवर चैटबॉट आंसर्ड 4,400 क्यूरीज, एंड हम लोगों ने फिर क्योंकि हमें समझ आ गई थी कि वी हैव टू वर्क विद द कस्टमर डिमांड, तो फिर हम लोगों ने जो डाटा फर्स्ट 2 मंथ्स में उसको एनालाइज किया, तो वो पेशेंट वांट्स के अपॉइंटमेंट बुकिंग का मॉड्यूल हो इसमें, और इसमें वैकेंसीज की चीज़ें हैं, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोगों ने अपने मॉडल्स की बिजनेस मॉडल डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया कि पहले हम बेसिक में चलेंगे, फिर हम थोड़ा एग्जेक्टिव पे जाएंगे, फिर गेट अ कोटेशन एंटरप्राइज लेवल वाले पे जाएंगे। बेसिक में वी आर गिविंग देम 200 क्यूरीज पर डे की, 200 स्टैटिक डाटा होगा और उसमें, और लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश होगी। प्रीमियम में हम लोग अपॉइंटमेंट बुकिंग्स भी कर रहे हैं, हम डायनामिक डाटा के साथ डील कर रहे हैं, जो कि अभी हमारे पास नहीं मतलब बना हुआ नहीं है वो चीज़, और व्हाट्सएप के थ्रू आप क्यूरीज के आंसर दे सकते हैं, राइट? और उसमें 1000+ क्यूरीज, सो वी गेट अ कस्टमर, उसने कहा कि मैं इसके पैसे देता हूँ आपको, तो हम लोगों ने इसके डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन माय क्वेश्चन इज, जो हम लोगों ने 6 महीने मेहनत की, दैट EMR सिस्टम दैट्स डिसेंट्रलाइज्ड विद अ विजन कि हमारा मेडिकल डाटा हमारा, वी ओन इट, वी हैव आवर मेडिकल डाटा वन लाइक विद इन आवर फोन, हर टाइम हर जगह पे, तो उसको क्या वी आर लाइक मेकिंग अ मैप कि हम उसको भी कहीं इंटीग्रेट कर लें, लाइक व्हाट्सएप के ऊपर अपना MR नंबर लिखें और हमारे सारा डाटा आ जाए हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, वी डोंट हैव टू इंस्टॉल अनदर एप्लीकेशन। सो डू यू आई थिंक आपका क्वेश्चन समझ आ गया। सो व्हाट शी लव हर प्रोडक्ट, ठीक है? ये भी प्रोडक्ट के बारे में आप इनको घंटा बुलाएंगी, घंटा बात करेंगी, बिकॉज शी इज पैशनेट अबाउट इट। समझ आ गई सर, वही वाला डिलेमा जो हमारे जो टेक फाउंडर्स का डिलेमा जो अभी बात की मैंने। अब बताएं कि क्या क्या इलाज है। Because we are making money out of chatbots. एब्सोल्युटली, चैटबॉट से पैसे बन रहे हैं, वो नहीं पसंद, क्योंकि वो उससे पैसे बन रहे हैं, वो जिससे नहीं बन रहे वो पसंद है, क्योंकि वो पैशन प्रोजेक्ट है। तो सर आप बताएं पैशन प्रोजेक्ट के साथ क्या किया जाए? देखिए, you need to start thinking as a businessman rather than an engineer, ठीक है? और देखिए, जो चीज़ कमा रही होती है ना पैसे, उसी के ऊपर डालने चाहिए पैसे, राइट? उसी पे फोकस होना चाहिए। आसान जवाब तो इसका यही है कि वट एवर इज मेकिंग मनी फॉर यू राइट नाउ, फोकस ऑन दैट, कीप दैट अलाइव। वो जो भी है आपके पास, उसको अपने पास रखें, कीप इट ऑन द बैक ऑफ योर माइंड। किसी ना किसी जगह पे, कहीं ना कहीं पे आपको उसकी यूटिलिटी यूज हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन एज बिजनेस ओनर्स, आपको जब जिस चीज में जो जिस कस्टमर को चाहिए, वंस अगेन कस्टमर इज द किंग, राइट? कस्टमर ड्राइव्स योर प्रोडक्ट। अगर आप अपना पैशन करोगे तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यू विल हैव टू क्लोज डोर वेरी सून, एंड दैट्स समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू वंस यू आर बिग इनफ। देखिए, होता इसी तरह ही है। पहले शुरू शुरू के अंदर व्हेन यू स्टार्ट ऑफ एनीथिंग, इट्स वेरी स्मॉल एंड यू हैव टू लाइक सेल इट। आप आहिस्ता 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 उसको इतना बड़ा कर लेते हो जहाँ पे पीपल आर कमिंग टू यू नाउ, दे वांट यू, राइट? ट्राई टू गेट एट दैट पॉइंट, एंड और फिर उसके बाद अब थोड़ा सा आप अपनी भी मनवा सकोगे उसके अंदर। एंड आई थिंक EMR के अंदर भी पोटेंशियल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट इन द पाकिस्तानी मार्केट, ट्रेंड इज गोइंग ओवर देयर। इनको खैर ब्लॉकचेन की तो समझ ही नहीं आएगी, इनसे सिर्फ वो जो नोट्स लिखवा लेना है EMR के ऊपर, वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप कर सको तो। I remember we had a very difficult time trying to optimize the doctor's notes and the prescriptions के यार एक क्लिक के ऊपर अब पूरी पूरी प्रिस्क्रिप्शन बन जाती है हमारे सिस्टम के अंदर। So having said all of that, I really like that you have a passion for something, and I'd like to suggest कि please keep your passion alive, ठीक है? But focus on the thing that is making you money right now, especially if you see कि इसमें potential है कि ये grow करेगा, इसकी मार्केट बड़ी है, ये इसमें वो टेक प्रोडक्ट वाली खसूसियात हैं, ये आपको प्रोडक्ट बना के देगा, तो उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है? अगर आप US की मार्केट में होती, मे भी किसी और मार्केट में होती, तो मैं शायद आपको कुछ डिफरेंट सजेशन देता, लेकिन मुझे इस मार्केट का बहुत अच्छे तरीके से पता है। EMRs over blockchain won't sell over here for the next 50 years. 50 साल लगेंगे कि लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू करें। श्योर श्योर। हाँ, क्विक क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। कस्टमर, राइट? आई एम इन अ कोहोर्ट ऑफ UNDP, और उधर एक और स्टार्टअप है
she's Bangladeshi, but she's operating her startup in London, right? So she want us to collaborate. She want us to sell my product to her in a way कि मेरे product का नाम ना हो उसके पास. She want to be my White label करना White चाह label, रही है. हाँ. right? Right. First, she's doing the same thing for booking appointments वगैरह, but she want that AI agent for her. So what should I call that? Partnership, customer, or what? देखिए अगर तो वो वाइट लेबल करके आपसे खरीद रही हैं वो, ठीक है, तो शी इज मोर ऑफ अ कस्टमर. और अगर वो इस तरह से ले रही हैं कि अच्छा आप वाइट लेबल करके मुझे दे दो, जब सेल होगी तो मैं आपको पैसे दूंगी, तो भी आई सी दैट एज अ कस्टमर. इट्स नॉट अ पार्टनरशिप. It's not a partnership. Right. It's a customer. All right. Yeah, Thank you you should so treat much. her as a customer. And white labeling is a very good market. It is a very good market. Yeah, I think it's more dependent upon your vision, right? कि आपका vision क्या है? अगर How you क्या want to operate. क्या आप कल को expand करके UK की market में जाना चाहती हो, जहाँ पे फिर वो आपका competition होगी, because you're closing one door for you, and it's okay at this stage to do that because that brings in money. That so it's your vision that drives all of this. I'm not endorsing it, neither am I against that, but you should understand कि अगर आप किसी को एक region के लिए white label करके एक product दे देते हो, कल को उधर expand करने की कोशिश करोगे, so that will be a competitor of yours, right? All At least वो doors आप अपने लिए But close when कर you लो. reach there is another because I have this experience because I did this in one country actually. So we sold a platform for one country and we locked it over there because that country was locked for us then. So yes, in that country you not, but it actually gave you starting the jump start and to started the revenue. So from that, if they can start generating the revenue, so it's a customer, it's okay. For 10, like we have how many countries in the world? If you lock 10 countries and you the bigger market you keep it yourself, it's good. हाँ जी, चलें फिर हम आगे आते हैं. Can you ठीक है? Yeah, and जी नवेरा, आप you want to add can something? you talk about distribution model with them? Can they be your distributors in the UK market? And you guys do revenue sharing? Actually, what she wanted, she said that she has very good in marketing over here. She can get that NHS, I think, कई grants वगैरह for us. लेकिन she wants कि जो product जाए वो उसकी company के नाम से जाए आगे. Because she want to be represented. कहते आप tech part देख लो, we'll do marketing over here. I'll onboard hospitals and stuff. So that's why I'm asking कि partnership होगी कि I'll consider it as my clients. So मेरा यहाँ पर I think थोड़ा सा different opinion होगा. If I were in your position, if I was in your position, I would not go for it. लेकिन मैं उनसे distribution model के ऊपर ज़रूर बात करती कि I have a product ready, you are good in marketing, why don't we both benefit from it? You close this much and let's make money together. But selling out a product, your product, like I wouldn't do that. I think it was your question, the last one as well, the passion project, that product that you guys have. It was your question, right? Yeah, so her passion project, she's actually talking about the same passion project. So Yeah. she's developed an EMR solution, and now she the same product. Shifted to chat. But now it Medical has chatbot. been shifted to a chatbot solution. Yeah, I understood that part. So अगर मैं यहाँ पे अपनी example दे सकूँ, we started off with K-12, kindergarten to 12 standard, and we created a lot of interactive games for these children, middle school and above mainly. COVID happened. There were a lot of reasons. We scaled to the US, but then things stopped happening for K-12. So we had to, park that. But now the conversations are starting again that people want to utilize our content. And that was also our passion project. What we're doing right now, we also have AI agents and RAG and everything, and that's making a lot of money for us. But the passion project is still there, but I still wouldn't give it to someone as white label. I would like to go for a distributor model. मैं उसके अंदर भी अलग, मतलब I wouldn't sit
in my 9 to 5 hours or 9 to 6 hours, और मैं उसके ऊपर काम नहीं कर रही हूँगी, I will be working on something that is making money for me. But because this is my passion, I can sit till 9 or till 10 or till 12, or travel over the weekend to take a meeting or something like that. That's something that I'll do. But I wouldn't white label it for anybody. If you can talk about it, talk to her about a distribution model where she can be a good partner to you and you guys can sell it together. Maybe that's something that you can discuss. It's my opinion. Right. Thank you. Thank you. Thank you. जी अच्छा अहमद, हम आपका वो दूसरे फाउंडर एक का सवाल एक साथ ले लेते हैं, ठीक है? सो अली हसन, 3 मुसाफिर एंड अहमद सुसैर्स दोनों एक एक वर्चुअल अटेंड कर रहे हैं और एक इन पर्सन है. तो वही क्वेश्चन आपने कहा, आपका भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का ये है कि व्हाट इफ अ सॉल्यूशन सॉल्व्स मोर देन वन प्रॉब्लम ऑफ अ कस्टमर सेगमेंट. थोड़ा सा इसे समझा दूं और मतलब इसमें क्या पार्ट. तो चलिए नवेरा आपसे ही स्टार्ट करते हैं, देन वी विल टेक इट फ्रॉम सरफराज. एक्सक्यूज मी, अच्छा आप ऐड करें ना, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ. आप ऐड करें, बिल्कुल आप ऐड. इसमें बेसिकली ये है कि जब भी हम एफआई की असाइनमेंट्स करते हैं उसमें भी ये लिखा होता है वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, बहुत इस पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होता है. तो आई वांटेड टू नो इफ अ प्रॉब्लम सॉल्व्स मोर देन वन, लाइक जो सोल्यूशन है इट प्रोवाइड्स मोर देन वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, मुझे किस पे फोकस करना चाहिए. फॉर एग्जांपल the people who come on trips, mostly it's like 50% females. For females, we solve 2 problems. One is safe tourism, and the second is the entertainment that they get out of it, जो males भी feel करते हैं. अच्छा थोड़ा सा अच्छा सौरा अहमद, एक सेकंड, थोड़ा ब्रेक. अपना स्टार्टअप को जरा एक्सप्लेन करें व्हाट यू डू, सो दैट आई थिंक बिकॉज नवेरा ने लेट ज्वाइन किया, सो शी डजंट नो व्हाट यू डू, और ताकि फिर आपका क्वेश्चन का आंसर अच्छा सही मिल सकेगा. जी जी. Navera, we're building a community platform for people to travel together. और वो कौन से लोग होंगे जो लाइक माइंडेड लोग होंगे, कमिंग फॉर डिफरेंट इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल सम पीपल कम फॉर एडवेंचर, हम उनको एडवेंचर ट्रिप्स पे बुलाएं. सम पीपल कम फॉर डिटॉक्स, सम पीपल कम फॉर पार्टी. सो 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लाइक वन, दीज आर द 3 डिफरेंट एग्जांपल्स जो मैं भी दे रहा हूँ. People come together from all over Pakistan, they go to this trip and we feel like travel is the best way to make them bond. ठीक है? अब उसमें we do other things as well, like for example for building the community we have a screening process, and through that we ensure कि जो लोग आ रहे हैं वो इसी मकसद के लिए आ रहे हैं. अगर wellness retreat है तो कोई और बंदा किसी और मकसद के लिए ना आए, वो wellness के लिए ही आ रहा है. So this is what we do, and a part of that is that हम एक 50-50 quota set kiya hua, like 50% males, 50% females. This is what we do differently from the rest of the market, and this provides a safe environment for the females who are coming on the trip. So the problem I'm solving, is it providing the entertainment to those people, yeah, providing the theme trips, or is it providing safe tourism for females? So I'm kind of confused as to which one should I focus, or should I even focus on just one problem? It's a valid problem to have. और कामरान, यहाँ पर एक अली हसन का भी एक जी जी question अली, है. जी जी अली का भी क्वेश्चन सेम ही है, सेम फाउंडर. लाइक अली, यू वांट टू ऐड प्लीज? बिल्कुल ठीक है. So guys, I know as a founder you get really excited अगर आपके एक चीज multiple problems को resolve कर रही हो, but trust me, usually ऐसा होता नहीं है. आपकी जो आपने एक चीज जो बनाई है वो किसी एक कस्टमर सेगमेंट का एक प्रॉब्लम भी रिजॉल्व कर दे, तो आई मीन दैट इज समथिंग अमेजिंग. यहाँ पे आपका फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट्स easy to get distracted. It's very easy to spread yourself too thin. My advice would be that don't do it. Focus रखो. एक किसी प्रॉब्लम को, एक कस्टमर सेगमेंट को सामने रखते हुए, when you actually resolve the problem, here maybe after some time, once you have established yourself in that particular segment, you can talk about all right fine, तो मेरा ये वाला solution था, maybe I can also help this particular customer segment, और मैं एक और problem solution या मैं एक और value proposition के ऊपर जा सकता हूँ, then do it. But अगर शुरू में आप अपना focus बहुत ज़्यादा thin spread कर दोगे, यार ये भी, तो कुछ भी नहीं होगा. और
trust me, कुछ भी नहीं होगा. I'd like to add something here. Yeah. Context thoda kam hai. Yes, we've been operating in the tourism industry for 4 years now. Is saal we have catered more than 1500 musafirs. तो जो value propositions अभी जिनकी अहमद ने inform की हैं, वो कुछ हद तक not entirely but कुछ हद तक वो segmentation is backed by our users कि yes, we are solving that problem. Now moving forward, since we're at NIC, we want to understand how to prioritize that properly. कि हम let's say अगर हमने उस segment को 10% get कर लिया market से, right? Now we want to expand that to 100%, right? Or even greater than 50%. So how do we prioritize those solutions properly? Should we focus on the target market or the impact or how much money we can get in, or certain different variables come into my mind when I think about what to focus on from here on out? Ali, let me ask you this question. जब आप target market की बात करते हो and you're solving a problem, तो वही impact नहीं होता? So I have solved this problem for, let's say, 50,000 people. Isn't that my impact? It is the impact. So एक ही बात है ना? Right. Okay. Revenue भी इसी से निकल रहा है. So I'm solving a problem. I'm creating an impact. I'm making money out of it. Right. Okay. Right. ये चीजें स्टैंड अलोन नहीं है. ऐसे नहीं होता है कि आप कस्टमर सेगमेंट या किसी एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हो, इम्पैक्ट आपको किसी और सेगमेंट में मिल रहा हो और रेवेन्यू आप कहीं और से कमा रहे हो. डजंट हैपन दैट वे, राइट? आप जहाँ पे फोकस कर रहे हो वहीं से आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं, वही आपको टेस्टिमनी दे रहे हैं, वही आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, वहीं से आपका इम्पैक्ट आ रहा है, वहीं से आपका रेवेन्यू आ रहा है. Okay. Right. So if you're solving, let's say, 2 problems for tourists, आप कह रहे हो कि safe travel for women, और आप एक और problem जो उठा रहे हो. So अगर आपकी ये problems हैं या आपकी ये value propositions हैं, so आपकी जो value propositions हैं, ये basically आपका वो impact matrix आप create कर रहे हो जो कि आपकी product generate कर रही है या जो create कर रही है, right? So ये एक ही उसके ऊपर बात आप कर रहे हो. और देखो 4 साल का आप कह रहे हो, 4 साल में you have served 1500 is the number that you said? Only this year. A total of, yes. Only this year 1500 मुसाफिर किए हमने. बिल्कुल ठीक है. It's a good number. लेकिन आप इस इंडस्ट्री में कुछ जाइंट्स के साथ compete कर रहे हो जिनके नंबर्स उससे बहुत ज्यादा हैं. Right? So I would say कि focus important होगा इस point पे. आप focus अपना जरूर रखो. Keep exploring other options. अगर आपको ये feel हो रहा है कि मेरा एक, so मैं आपको again अपने उससे एक example देती हूँ. So our AI agent is solving sales problems for PepsiCo. ठीक है? And I want to sell them something else as well, but I will wait for the right time to pitch that to them. उसके लिए मुझे काफी सारी R&D करनी पड़ेगी, मुझे राइट टाइम का इंतजार करना पड़ेगा. अगर मेरे पास लेट्स से मैं किसी से बात कर रही हूँ, लाइक फाइन, इस दफा हायरिंग में हमें ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, मे बी देन आई कैन ब्रिंग पिच इट इन, या किसी तरीके से आई विल नॉट जंप ऑन इट. मेरे पास कुछ है जो कि मुझे लग रहा है अच्छा है, लेकिन मैं उसको तब तक नहीं करूंगी जब तक मेरे पास राइट टाइम नहीं आएगा, मेरे पास उसको एक्चुअली पिच करने का मौका नहीं मिलेगा और मैंने उसको पहले से ट्राई आउट नहीं किया हुआ होगा. तो मैं उसको एक्चुअली किसी भी कस्टमर के ऊपर या किसी बड़े कस्टमर के ऊपर, बट मेरी मार्केट B2B, आप B2C में काम कर रहे हो, इसको आप टैकल टेस्ट इस थ्रू भी कर सकते हो. एक छोटा डाटा सेट बना के उनके साथ यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट एंड सी हाउ द रिजल्ट्स आर. जो भी आप अपनी न्यू वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ जाना चाहते हो उस तरह भी कर सकते हो. बट अगेन फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. FI जो अपनी असाइनमेंट्स में आपसे कह रहा है एक प्रोडक्ट एक सोल्यूशन के लिए, देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर सेइंग दिस, एंड देयर इज अ रीजन आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप भी ये बात कहोगे कि यार फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. फोकस के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते हो. आप किसी भी इन्वेस्टर से बात कर लो, किसी भी फाउंडर से बात कर लो, दे आर सॉल्विंग वन प्रॉब्लम एट अ टाइम. एक कस्टमर सेगमेंट के लिए एक प्रॉब्लम रिजॉल्व करें, दैट्स इट, दैट्स ऑल दे आर डूइंग, एंड दैट्स ऑल इन्वेस्टर्स वांट टू सी इन यू. So razor sharp focus, right? Yes.
आई एम नॉट श्योर अगर आपने YC की अभी जो एक इनका जो कोहोर्ट सिलेक्ट हुआ है अगर आपने वो देखा हो तो AI एजेंट्स के ऊपर बात हो रही है बट AI एजेंट्स इन जनरल बात नहीं हो रही AI एजेंट्स onboarding not even hiring. So there's this whole startup working on onboarding. They're not talking about hiring. Then there's another startup which is totally focused on hiring, not talking about onboarding or anything else. You getting my point? Because even if the market is right or market is same, जिन्होंने hiring करनी है उन्होंने onboarding भी करानी है, but your sharp focus is on hiring or on onboarding, not on both. Ji Sarfraz, you want to add something and then I guess in this question. I think Navera ने बड़ा अच्छा तरीके से समाप्त कर दिया इस सारी बात को. No point in repeating any of that. I think she's spot on. It has to be laser focus. My suggestion would be कि if I'm in your place तो I try to see कि मैं किस वर्टिकल के अंदर सबसे ज्यादा डिसरप्शन कॉज कर सकता हूँ और कौन से वर्टिकल को सबसे ज्यादा डोमिनेट कर सकता हूँ. That can come from number one, the revenues that you've made so far. Number two, whatever you feel like is your forte. Right? आप 4-5 काम कर रहे हो. हॉरिजॉन्टली स्केल करना आसान होता है वैसे, ठीक है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टली स्केल, जिस तरह हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इसको बोलते हैं कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ. वर्टिकल स्केलिंग होती है एक ही चीज़ के अंदर बहुत ऊपर जाना. तो वो जो हम टेक प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, टेक प्रोडक्ट वर्टिकली पहले स्केल करता है, बाद में हॉरिजॉन्टली स्केल करता है. तो आई थिंक मतलब what you should be aiming for is like exponential growth, and you need to see which area is it where you can really dominate and you can disrupt the market. And what is your secret sauce? You cannot have a secret sauce for everything, right? And then the focus thing. क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं यार बंदे के पास. एज अ स्टार्टअप फाउंडर पैसे ही नहीं होते. खुद भी देखें, you have to do it 10x better than the other players are doing it if you want that exponential growth. So क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसे और बहुत कुछ है. We are limited on that side, right? I like to add here, बहुत अच्छा कहा, बट अगर आप 4 साल से एक बिजनेस में हैं और यू आर डूइंग द नंबर्स, तो नंबर्स वुड बी टेलिंग यू मोर बेटर कि मेरी क्या फोरकास्टिंग क्या है और फोरकास्टिंग में मेरा कहाँ से कितना बिजनेस आ रहा है. और जो आपने कहा कि जी मैं एक ही के 10 डिफरेंट क्या कहते हैं उसके हम हल कर रहे हैं मसले और उसमें इतने परसेंट ये हैं, तो इसकी मीन कि क्या वो एक सेपरेट मार्केट है या उसी मार्केट का शेयर है. ठीक है. सो ये एक चीज जो मुझे फील होता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक टू स्टार्टअप्स. अगर टेक स्टार्टअप है तो दे आर मोस्टली टेक. देयर नो फाइनेंस गाय विद देम, right? There is no HR guy with them. There's no collaboration or combination between different जो क्या कहते हैं जो क्रॉस इंडस्ट्रीज होती हैं या क्रॉस एक्सपर्टीज होती हैं. तो उसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे चैलेंजेस होते हैं, जो स्पेशली ये वाले चैलेंजेस, अगर 4 साल से इफ यू आर रनिंग, यू माइट बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय योरसेल्फ. तो ये नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो वो फोकस इज देन कीप फोकस. हाँ जी. हाँ आप पर उसके बाद फिर ये अरे आपका जी आप क्वेश्चन कर लो, फिर आप भी कर लो, तो हम दोनों क्वेश्चंस भी एक साथ ले लेते हैं. श्योर. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाशिम है. आई एम द चीफ डेटा ऑफिसर फॉर कॉस्मोसिस. टू रिइटरेट, मिस्टर सरफराज wasn't there. We're building Pakistan's first talent search engine, and our eventual goal is to become an end-to-end applicant tracking system. और जितना हमने अपने कंपेटिटर्स लोकल एंड इंटरनेशनल ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल किया है, वी डू बिलीव दैट आवर प्रोडक्ट जो बन रहा है इट्स क्वाइट गुड एंड इट्स समवट सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग इट बेटर देन द अदर सिस्टम्स. लेकिन जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो भी HR प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर वो किसी ATS सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स नॉट कि वो आज ये कर रहे हैं तो कल दूसरा कर रहे हैं. वो सालों सालों एक ही सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. एंड ह्यूमंस नेचुरली दे हेट चेंज. मैं किसी को बोलूँगा कि तुम दूसरा रास्ता ले लो, वो करीब पड़ेगा तुमको, वो नहीं लेगा. जो पिछले 4 साल से ले रहा है वही लेगा, इवन इफ इट्स अ बेटर रास्ता. तो इस प्रॉब्लम को और एक इंसान को कोई इंसेंटिवाइज करना कि आप प्लीज़ चेंज कर लो, और उनके पैसे भी नहीं लगे क्योंकि दिस इज अ B2B थिंग. कंपनी पेज फॉर द ATS सिस्टम, तो बंदे के पैसे भी उस तरह सेव नहीं हो रहे जो HR प्रोफेशनल है विच हैज़ टू मेक दैट डिसीजन. तो दे आर नॉट ससेप्टेबल टू चेंज, एंड दैट्स something that I'm very confused about. दूसरा क्वेश्चन भी साथ लेने तैमूर का. अच्छा चलें, ओके.
पहले क्वेश्चन आप आंसर करो सरफराज, आपसे ही क्वेश्चन किए बिकॉज आपका वेट कर रहे थे, आप नहीं थे। अच्छा हाँ यार, ओके सो यार बिल्कुल वैलिड आपकी बातें जितनी भी आपने की हैं, बट आई थिंक द वे यू अप्रोच इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, किसी की रिक्वेस्ट पे बनाया था, कस्टमर ने कहा बना दो, हमने बना दिया। हमने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की कि हाँ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है, बट वी डिडंट गो टू चेंज एनीवन्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स अप फ्रंट। हम जब उसको डिप्लॉय करने गए तो हमने कोशिश की कि उन लोगों को पिच करें जिनके पास नहीं है कुछ भी, राइट, एंड उन लोगों को सेल करने की कोशिश की। उन लोगों को सेल हुआ शुरू में जिनके पास ऑलरेडी सिस्टम है। ऑफ कोर्स मतलब वो एक कंफर्ट बन चुकी है, दे आर ऑलरेडी इन दैट कंफर्ट जोन। उसको ब्रेक करके निकलेंगे वो तब जब कोई और बंदा उनको आके बताएगा कि अच्छा यार तुम्हारे सॉफ्टवेयर में ये नहीं होता, वो तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, वो तो ये भी कर देता है, राइट। So I think in your case, as you plan your launch, your focus has to be the organizations जहाँ पे या तो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी नहीं यूज हो रहा है, या बहुत मैनुअल सिस्टम प्रोसेसिंग हो रही है, या कोई बहुत ही, you have to do that research, कौन सी organization क्या यूज कर रही है, and then you have to like sort of build that funnel. There your chances are much better rather than going up front and challenging someone who's already using a very mature system. Uh, that's how I do it. I hope it answers the questions. अगर कुछ मिस हो गया तो प्लीज पूछें। ठीक है जी जैमू, आप क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए। हाँ थोड़ा सा, लेकिन पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं, व्हाट यू डू, एंड देन आपका क्वेश्चन। आई एम तैमूर and I'm representing Scholar B. So Sorry? Scholar B. Okay. What we are building is quite similar to you, लेकिन थोड़ा सा niche different है। हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, एंड पीपल हु वांट टू अप्लाई जस्ट फॉर द एडमिशन से वो आएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, दे अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज़, और जहाँ पे एडमिशन होता है दे कैन गेट इट। सिंपल एक सोल्यूशन को हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को, हाँ that's it. एप्लीकेशंस को, सिंपल। Okay. ठीक है, अब आपने क्योंकि जो अपना बताया इशू, क्योंकि आई बीन वर्किंग विद द यूनिवर्सिटीज़, मैंने कॉमसेट्स की जो वेबसाइट है, रिफर की जो वेबसाइट है, वो हम लोगों ने क्रिएट की है। एंड बीइंग ए स्टूडेंट मुझे ये प्रॉब्लम खुद नज़र आई थी कि डेडलाइंस मिस हो जाती हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं पता, स्कॉलरशिप्स का नहीं पता होता, जो चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि हर वेबसाइट डिफरेंट है, हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट तरह से बना रही है। तो मैंने कहा देयर शुड बी अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, तो दैट इज़ व्हाट वी आर टारगेटिंग एट द मोमेंट। Very good. लेकिन आपने जो इशू बताया विच माइट कम ऑन, अभी तो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। वी हैव पाकिस्तान में 20-30 यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी यूएई बेस्ड यूनिवर्सिटीज़, सऊदी बेस्ड यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि कंपनी वहाँ पे भी रजिस्टर्ड है एंड फंडिंग का भी हमें इशू नहीं। तो आप इस अप्रोच को किस तरह से कहेंगे कि हम वो प्रॉब्लम ना फेस कर सकें जो आपने की, क्योंकि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच मैंने उतनी ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि मैंने खुद उस प्रॉब्लम से गुजरा, यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करके मुझे आइडिया हुआ कि दे आर फेसिंग द सेम थिंग, कि बच्चे उनके पास उस तरह के अच्छे नहीं आ रहे, और हर कंसल्टेंट फोकस कर रहा है यूएस के बच्चों पे, यूके के बच्चों पे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने वाले बच्चों के। तो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, बच्चे यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू HEC डाटा 3 मिलियन बच्चा पाकिस्तान में इनरोल करता है। Yeah. तो ये इस प्रॉब्लम को देखने के बाद मैंने इस चीज़ पे वर्कआउट की, स्टूडेंट से पूछा, अपने ख़ानदान में पूछा, डिफरेंट स्टूडेंट से पूछा, यूनिवर्सिटी से पूछा जो क्लाइंट बेस थे, उन्होंने फीडबैक दिया। तो इज वॉज इट इनफ टू वर्कआउट, क्योंकि हम MVP स्टेज ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं, हम तो प्री सीड में जाने लगे। ठीक। सो जितनी मुझे आपके प्रोडक्ट की समझ आई है वो ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जाके मैं अगर अपनी एप्लीकेशन फिल कर दूंगा तो अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। एम आई करेक्ट? इट्स अ मार्केटप्लेस, यू कैन अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज हुएवर यू वांट टू, लाइक हाँ, लिस्टेड हुई हुई हैं, आपने नस्ट में मेरी अप्लाई एक करनी है। एप्लीकेशन है एंड वो ऑटोमेटिकली मैं जिस चीज़ को सिलेक्ट करूंगा वहाँ वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बिल्कुल। सो इट मेक्स माई लाइफ इजियर एज अ स्टूडेंट कि मुझे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करना पड़ता, और यूनिवर्सिटीज़ को भी एक सेंट्रलाइज जगह से बिल्कुल। एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। सो इसमें आपके कस्टमर दो साइडेड है, ठीक है, एक है यूनिवर्सिटीज़, एक है द स्टूडेंट्स। आप पैसे किससे ले रहे हो? पैसे यूनिवर्सिटी से। क्या यूनिवर्सिटीज़ का ये प्रॉब्लम है? यूनिवर्सिटीज का ये प्रॉब्लम है कि जो इमर्जिंग मार्केट की यूनिवर्सिटीज हैं, दे डोंट हैव इनफ स्टूडेंट्स, उनको हर वक्त बच्चा चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट से फॉर एग्जांपल रिफा यूनिवर्सिटी। रिफा यूनिवर्सिटी को बच्चे ठीक है, चाहिए। रिफा यूनिवर्सिटी को बच्चे चाहिए, तो आपका प्लेटफॉर्म उसको हेल्प करता है, एक्सेसिबल बना देता है। बिल्कुल। लेकिन कोई बच्चा आएगा उसके पास या नहीं, वो तो जब बाकियों से रिजेक्ट हो जाएगा और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी
तो फिर वो रिफा में जाएगा, राइट? ठीक है। एंड डू यू हैव एनी नंबर्स टू वैलिडेट योर वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर रफा, कि रफा क्यों यूज करने से उसको क्या फायदा होगा? रिफा के पास ऑलरेडी पर ईयर 10,000 बच्चा एडमिशन ले रहा है, बिल्कुल बट ले रहा स्टिल है। इट्स देयर लास्ट चॉइस। ठीक है, अब हाँ, कस्ट है, व्हेनेवर ठीक है, दे आर लॉन्चिंग अ न्यू, सपोज कोई न्यू डिग्री लॉन्च करें, ठीक है, उनमें उसको बच्चे नहीं मिलते, तो उस तरह के बच्चों के लिए दे वांट कि हमारे पास बच्चे और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, लाइक जो डील अभी तक हम लोगों ने एमओयूज वगैरह साइन कर रहे हैं, कस्ट माजू जो थी, दे आर विलिंग कि हम आपको बच्चे पहले सेमेस्टर के लिए 10 बच्चे हम आपको फ्री भी कर देंगे। सपोज आप हमें 20 बच्चे देते हैं, हम आपको 10 बच्चे फॉर फर्स्ट सेमेस्टर फ्री दे देंगे। विल नॉट गोना चार्ज देम एनीथिंग, क्योंकि उन्हें बच्चा चाहिए। एंड कस्ट एक बुरी यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, नस्ट जो है, बिकॉज आई हैव अ रेफरेंस, नस्ट जो हमें कमीशन देने के लिए तैयार है, इट्स वेरी लेस कंपेयर टू अदर मार्केट, बट दे आर विलिंग टू, क्योंकि उनको जो इंटरनेशनल बच्चे की अप्रोच नजर आ रही है ना, वो वहां पे हैप्पी हैं कि इंटरनेशनल बच्चा सो देखो, तुम अपने आप को इस टाइम पोजीशन इस तरह से कर रहे हो कि मैं आपको स्टूडेंट्स ला के दूंगा, स्टूडेंट्स ला के मैं कंसल्टेंट हूँ, सिंपल है, ठीक है, और मैं आपको स्टूडेंट ला के दूंगा, जो मैं स्टूडेंट ला के दूंगा उसके ऊपर मुझे कमीशन दे देना, आसान अल्फाज में बिल्कुल। राइट? सो देखें, स्मॉलर यूनिवर्सिटीज विल लव यू, ठीक है, उन्होंने आपको पैसे उस वक्त देने हैं जिस वक्त आप बच्चा लाओगे, उससे पहले तो देंगे नहीं, तो वो तो आप ढेरम ढेर साइन अप कर लोगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये सीधा सीधा बिजनेस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कल को आगे जाके आपको स्केल करने में शायद मदद देगा, ठीक है, बट इनिशियली सॉफ्टवेयर ना भी हो, इफ यू नो हाउ टू डू बिजनेस, you'd be able to give bring students to a university, that's not an issue, ठीक है। सो मेरा ये ख्याल है कि द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, मतलब इफ आई एम रनिंग दिस बिजनेस, एक तो मेरा फोकस रिलेटिवली स्मॉलर सिटीज और स्मॉलर सिटीज, गांव टाउन्स के अंदर होना था, फॉर ब्रिंगिंग इन द कैंडिडेट्स, और कॉन्ट्रैक्ट्स विद स्मॉलर यूनिवर्सिटीज रिलेटिवली इजीली हो जाती हैं। आपने माशाल्लाह नेस्ट को कर लिया, बड़ी अचीवमेंट है, इस तरह बाकियों को भी करने की कोशिश करें। सो आई थिंक के this research on the customer side, university side, you'll be pretty much good, कुछ आपका कॉन्टैक्ट से होगा, कुछ आपका वैसे ही आपने सेंस में बिजनेस ला के देना तो आपके साथ कर लेंगे, तो उनके साइड पे आई डोंट सी अ लॉट ऑफ इशू। द मेजर इशू दैट आई सी इज कि यार आपके पास एप्लीकेंट कहाँ से आएगा, यूएसपी उसके लिए आपको बेसिकली ये डिटरमिन करना है कि जो एक गांव से बच्चा उठेगा जिसको नहीं पता कि मेरे लिए कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, is your platform good enough to educate him, and is the platform easy enough for him to actually apply? I think that will be the real differentiator for you, and I think you have to make that part very very easy। and यहाँ पे एग्जैक्टली अवर यूएसपी कम्स इन, वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ एआई सिस्टम, ठीक है, जो बच्चों को पाकिस्तान में 250 यूनिवर्सिटी हैं, कौन सी बेहतर है उसके लिए आप अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाएं, देयर इज नो क्लियर फॉर्मेट कि इतनी फीस है, ये चीजें हम लोग ये True. बड़ा क्लियरली सब कुछ लिस्ट करें। एक True. बच्चा जो बेशक हमारे थ्रू अप्लाई ना करे, True. लेकिन हमारे पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि सीएस की फीस रिफा में कितनी है, कॉमसेट्स में कितनी है, फास्ट में कितनी है, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू फाइंड आउट कि यार हमारे लिए क्या चीज बेटर है। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही ये है। चीज हम लोग इस तरह आई थिंक वही जो मैंने पहले भी शायद किसी को कहा था, बिल्ड योर पर्सोना, द आइडियल स्टूडेंट पर्सोना। यार ये बच्चे हैं वो उसके who would love to use this platform, क्योंकि maybe they are not well versed with the universities, they are not well versed कि उनके लिए कौन सी अच्छी है, और इनको हम टारगेट करना चाहते हैं। then do your research, अभी भी it's time, मतलब I think कि it's never too late, अभी भी मतलब जो आपके पास है आप बेशक वो ही यूज करें, बट गेट एन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि डेवलप सिटीज के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होगा, अंडर डेवलप जगहों पे जाओगे तो बहुत पोटेंशियल है आपके प्रोडक्ट का। आई आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। इंडिया में बहुत अच्छा स्टार्टअप चल रहा है, वेरी वेरी सिमिलर टू योर्स, डूइंग रियली वेल। वो काम ही ये करते हैं, सिर्फ वो जो स्मॉल टाउनर्स हैं उनको ला के तो यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिट कराते हैं, और उनको दे हेल्प देम फाइंड गुड यूनिवर्सिटीज, दे एक्चुअली आर प्रोवाइडिंग देम अ सर्विस, और उसी इंटेंशन से आप भी करें तो why सर not? आपके लिए क्वेश्चन है, बिकॉज आई वाज वर्किंग एज हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर कंपनी इन दुबई फॉर लास्ट 2 years, तो वहाँ पे मुझे मार्केटिंग का पार्ट और मेरा बैकग्राउंड टैक्स रिलेटेड था, तो आई गॉट दैट पॉइंट। जब सेल्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा ये चीज़ें बनानी पड़ रही हैं, हमारी बाकी चीज़ों के लिए कॉन्फ्रेंस हम यूज़ कर रहे हैं, डाटा गेट्स वगैरह सब चीज़ें हम लोगों ने लिखी हैं, ऑनबोर्डिंग स्ट्रेटजी सारा कुछ है, लेकिन इज देयर एनी वे कि आई कैन लर्न फ्रॉम समथिंग, या किसी ने ऑलरेडी सेल्स स्ट्रेटजीज बनाई हो, केपीआईज कैसे ऑनबोर्डिंग करनी है, लाइक अभी तक जो यूनिवर्सिटीज को मैं रीच आउट कर रहा हूँ,
because I have a relationship with them, it's very easy for me to get into the door. लेकिन जहाँ पे मेरे पास relationship नहीं है, I have to cold call या हम लोगों ने cold emailing करनी है, उसकी documentation कहाँ से easily कोई accessible कोई मैं template उठा लूँ, I don't want to use ChatGPT, कोई existing किसी कंपनी का डाटा हो या किस तरह से मैं इसको रीच आउट करके एग्जिस्टिंग लोगों को देखते हुए मैं बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनाऊं, बिकॉज आई बीन वर्किंग इन वेरी गुड कंपनीज, तो आई नो के प्रोसेसेस को फॉलो किया जाए और मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा फैन हूँ कि प्रोसेसेस बनाए जाएं. तो व्हाट डू यू सजेस्ट इन दैट, व्हाट डू आई फॉलो कि मैं इजीली हो जाए? आज की तारीख में अगर आप देखें तो आप कितनी यूनिवर्सिटीज ऑन बोर्ड है आपके पास? 20 पाकिस्तान से, यूएई और सऊदी में अलग है. वो अलग है, ठीक है. सो ए आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक हो चुका है, ठीक है. उसके अंदर चाहे रिलेशनशिप भी है और अगर रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी आपने कुछ क्वेरीज आपने रन की है, आपका प्रोसेस आपने रन किया है, जिसमें आपने सबसे पहले क्वालिफाई किया होगा, उसको प्रोस्पेक्ट किया होगा कि हाँ यार ये 4 यूनिवर्सिटी से मुझे इनसे बात करनी है, फिर उनमें से क्वालिफाई हुई होगी कि हाँ यार ये हमारे साथ जा सकती है, या उन्होंने आपको क्वालिफाई किया होगा. इट्स रेफरल बेस्ड एट द मोमेंट, जिन 20 सारी रेफरल बेस्ड बेस्ड है. है. सो देन ब्रिंग आउट ऑल द क्वेश्चंस जो कि वो हैं, क्या कहते हैं, जो कि हम क्या कहते हैं, बेस्ट, इसका एक खास वो नाम होता है, क्या कहते हैं, जो बेस्ट केस सिनेरियोस, बेस्ट प्रैक्टिसेस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. फिर आप वो उठाएंगे, क्योंकि अगर प्रोसेस तो आपकी कंपनी का होगा, ए कल्चर भी आपकी कंपनी का होगा, जो आपकी कंपनी का है वही बनेगा. अब अगर आपने एचआर के लिए तो बना लिया होगा, ठीक है, सपोज, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ आपने प्रोसेसेस ऐड करने हैं, सिस्टम्स तो आप उदी को रखेंगे, फिर क्वालिफाइंग क्वेश्चंस और वो ओवर द पीरियड आप ऐड कर देंगे, लेकिन वही अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस आप यूज करेंगे. क्योंकि इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि जी ये 10 क्वेश्चंस है, जिस तरह भी उन्होंने भी स्क्रिप्टिंग के वो एक लिंक दिया था, तो दे आर डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री, फॉर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट. ठीक. Sure, no worries. We are already going for a close as well. So if you don't have any other questions, so thank you very much, guys, for today's session. Thank you, Navera. And really appreciate आप आ गए टाइम, मतलब थोड़ा लेट आ गए, लेकिन बड़ा मजा आया, हमारे Q&A में बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ. So thank you, guys. Sorry Thank you very for much. this delay. No worries at all. Hope to see you in person very soon.